liability limited to installation-specific ceilings set out in the second schedule. So the doctrine of absolute liability held by the Supreme Court in the 1984 Bhopal gas disaster is being limited. The bill repeals the existing Civil Liability for Nuclear Damage (CLND) Act of 2010, uprooting decades-old legal protections around nuclear accidents, weakening accountability for suppliers. The liability cap, 300 million special drawing rights or SDR, a few $100 million or 3,900 crore, is absurdly insufficient compared to the catastrophic cost of a major nuclear accident. As per the Shanti Bill, the sovereign top-up is discretionary in form and fund design, not automatic, in comparison to what existed under the CLND Act. This means that beyond the limit of 3,900 crore as per the second schedule, the government will be liable. And this is discretionary in function. The liability is discretionary. The clause is thus highly regressive, as compensation beyond the given amount thus becomes optional, leaving communities and victims helpless. The citizen of India will be rendered helpless. Nuclear disasters take place on a vast scale, sir. In the 1986 Chernobyl catastrophe, the property damage was $7 billion, with 350,000 people resettled. In the Fukushima Daiichi disaster of 2011, the cleanup and compensation cost $180 billion, with 160,000 temporarily or permanently evacuated. So why this cap on liability, given the high urban population densities around sites like Tarapur and Kudankulam? The 2010 Act clearly defined the operator as a government or government company and allowed right of recourse, Section 15, against suppliers for defective components. The Shanti Bill redefines operators to include any company and allows liability transfer via contract, making supplier liability voluntary. The Shanti Bill shifts liability and recourse rules towards contract rather than statute, meaning suppliers can be insulated in the fine print of the contract and victims' ability to seek redress becomes uncertain. This is because contracts will be negotiated from an unequal bargaining position. It is terribly unfair to the victims, potential victims. Removing the provision of right of recourse is nothing but the anti-people playbook of the BJP. You are pro-oligarchy and anti-people. We have seen this play out in Bengal, where you have stopped Manrega and frozen funds amounting to 52,000 crore. What you want is people should have no right of recourse. But Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will always stand with the people of Bengal. That's exactly why we started the Kanya Shri scheme, paying 51 lakh beneficiaries from the state's own funds. But you only understand the language of profit, not the language of the people. Profit and nuclear safety cannot coexist, sir. One rewards cost-cutting, the other demands zero tolerance for error. These are irreconcilable philosophies, and the helpless Indian citizen will pay the price. Nuclear accidents are not imaginary fears. Chernobyl was not the result of mere technical failure. It was weak oversight and political pressure to prioritize output over safety. As a result, human lives were destroyed for generations. For generations, human lives were destroyed. Nuclear radiation does not negotiate. Nuclear radiation does not forgive. Nuclear radiation does not respect contracts and corporate liability clauses. We still remember the photo of the lifeless baby lying in the Bhopal mud. Shanti removes explicit acknowledgement of long-term radiation injury and allows the government to exempt facilities deemed insignificant risk of the ILO Convention number 115 on radiation protection. The bill also reflects a blind and obsessive push for nuclear expansion without adequate debate on alternatives or consequences. India is blessed with solar, wind, hydro, and storage potential. A responsible energy transition demands balance, not fixation on the one source. Energy security cannot come at the cost of human security. When safety audits slow down profits, which one will be sacrificed, sir? Which one will be sacrificed? Safety audits or profits? When maintenance budgets threaten balance sheets, what will be cut?
When emergency preparedness looks expensive, who will take responsibility? The global trend is to strengthen, not weaken safety norms, but this bill, Mr. Minister, is going in the opposite direction to what the global trend is. But the real shocker of the bill is this, sir. This sudden enthusiasm for opening India's nuclear sector coincides very conveniently with the intense foreign pressure, particularly from the United States, to allow private and foreign companies access to India's nuclear market. Under the existing DP-IIT FDI policy, private entities in atomic energy can attract up to 49% foreign investment. By removing the government company-only clause, the Shanti Bill enables such FDI. This is startling. Will foreign entities now gain control over one of the most strategic resources of our country? Shame. Is India's nuclear law being rewritten to suit foreign commercial interests? Shame. Is Parliament being asked to legalize what was politically promised abroad? Is national policy being shaped to please Washington rather than protect the citizens of India? Shame. This is a government of मुंह में स्वदेशी, दिल में विदेशी. मुंह में बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, but the dil is videshi. We must again remember the slogan, shouted with great enthusiasm by the leader of this government, Ab ki baar Trump Sarkar. That is what their motto is, Ab ki baar Trump Sarkar. It is sad that this slogan, Ab ki baar Trump Sarkar, seems to have become a policy for this government. Shame. This is not the Shanti Bill, sir. This is the TRUMP bill, the Trump bill, the Reactor Upgradation Management Program, TRUMP. This bill cannot be rushed through Parliament. This bill requires discussion. It requires extensive inputs from stakeholders. It requires a long legislative process. It is a shame that the Prime Minister is not in the House when this crucial bill is being discussed. Citizens of India's lives are at stake. Existentially, humankind is at stake. Nuclear radiation is a possible fallout. How can this bill be passed? How can this bill be rushed through Parliament with 4 hours notice, with a 4-hour debate? It cannot happen, sir. This bill has to be thought about more. There have to be more discussions. There have to be greater consultations with stakeholders. Otherwise, the lives of citizens of India are at stake. The lives of helpless citizens of India are at stake. I want to point out to you one important fact here, sir, that the nuclear installations that exist in our country are all in tribal areas, in the tribal regions. Nuclear mining, primarily for uranium, significantly impacts tribal regions globally, notably in India's Jharkhand, in the Jarugoda area, where indigenous communities, Santhal, Munda, Ho, suffer severe health crises like cancers, deformities, and contaminated water from mining. Are we going to let these helpless, vulnerable communities be at the mercy of profit maximization of oligarchs? Is that what we are trying to do here? This bill cannot go through in this shoddy, rushed manner. It needs much greater deliberation, much greater discussion. I would urge the minister who is sitting here, please rethink. The lives of Indians are at stake. The lives of citizens are at stake. This bill must not go through in this form. We need greater discussion. Thank you, sir. Jai Hind, Vande Mataram, Joy Bangla. Thank you. Honorable Shriman P. Wilson ji. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025, ironically branded as Shanti Bill. Sir, this bill will not give Shanti, but will snatch Shanti through nuclear shock. This bill is nothing but a nuclear bomb which threatens our country's peace and security. The nuclear supply chain is thought to be removed from the sovereign functions
and from the Union of India government's active oversight. Sir, there is nothing peaceful, nothing sustainable, nothing transformative about this legislation. On the contrary, it is a reckless, dangerous, and deeply flawed attempt to privatize one of the most sensitive and high-risk sectors of our nation, the nuclear energy sector. Sir, one of the most critical, essential sovereign function of an elected government is given to the private sector. Mark my words, the day is not far off when judiciary and legislative function will also be privatized. Sir, let me begin with section 31C and E of this bill. These provisions allow any company or any person explicitly permitted by the central government to apply for a license to establish and operate nuclear facilities. This blanket opening of the entire nuclear fuel cycle, from uranium mining to waste management to private entities with indeterminate qualification, unclear accountability, and profit as their primary motive. More disturbing is that this bill allows a single composite license to cover multiple stages of the nuclear fuel cycle. That means one corporate entity could control mining, fuel fabrication, reactor operation, and radioactive waste handling. Sir, this is dangerous concentration of power. Such monopolization exponentially heightens systematic risk. When one operator controls everything, a single failure, technical, financial, or ethical, can trigger catastrophic consequences. A private person could threaten the nation's security and still gets things done. Sir, we have already seen what monopolization of a critical sector can do to this country. The aviation sector is a stark warning before our eyes. When Indigo cancelled flights en masse, the country witnessed near paralysis, passengers stranded, fares shooting up overnight, and no alternate capacity to absorb the shock. One company's operational crisis became a national disruption. Let us be very clear, nuclear energy is not like ports, spectrum, liner projects, or airports. This is about fissile material, radioactive waste, and technologies that can devastate entire regions for generations. Handing over operational control of uranium, plutonium, and high-level radioactive waste to private corporation driven by quarterly profits and shareholder pressure is nothing short of irresponsible. So safety cannot be subordinate to the balance sheet. Sir, history is our sternest warning. Chernobyl, Fukushima, and 3 Mile Islands were not accidents of poverty or incompetence alone. They were failures of regulation, oversight, and human judgment. One mistake, one compromised safety protocol, and the consequences were irreversible. Are we prepared to repeat such tragedies on Indian soil? Even within our own country, nuclear projects have faced sustained public opposition due to the seismic risk, untested technologies, and a lack of transparency. Instead of addressing these legitimate concerns, this bill proposes to dilute supplier liability and shift responsibility onto the operators, many of whom now be the private players. Sir, there is a direct assault on nuclear accountability and public safety. Climate change only worsens the picture. With increasing cyclones, flood, heat waves, and rising sea levels, nuclear installations are becoming less safe, not more. In such a volatile environmental context, expanding nuclear power, especially under a private control, is a gamble with national security and human life. Sir, the environmental consequences are equally alarming. Radioactive waste remains lethal for thousands of years. Even today, India does not have a fully proven fail-safe long-term waste disposal mechanism, including for the spent nuclear fuel. This bill proposes expansion without first resolving this historic injustice. This is unacceptable. And yet, sir, the most troubling aspect is this: who stands to benefit? Large private conglomerates, including one of the noted industrialists close to the power corridors, have publicly expressed interest in entering the nuclear energy sector, and suddenly we have a bill that opens the entire nuclear fuel cycle to private players, allows composite licenses across mining operation and waste,
and caps liability at laughably lower levels. Sir, is this a coincidence, or this legislation being tailored to suit corporate entities rather than public safety? This bill appears tailor-made to facilitate corporate entry into a domain that was deliberately kept under the strict public control for reasons of national security and safety. Sir, are we legislating in the interest of people or in the anticipation of the corporate appetite? Nuclear power may have a limited complementary role, but this bill treats it as a silver bullet while privatizing profits and socializing risk. It undermines decades of carefully built safeguards and threatens the sovereignty of our energy policy. Sir, under this bill, the operator liability for a central nuclear installation above 3,600 megawatts is capped at mere 3,000 crores. For smaller reactors, it is even worse, as low as 100 crores, rising in tiers. And the total maximum liability per nuclear accident is fixed at rupees 300 million special drawing rights, roughly about 3,600 to 3,900 crores. Any cost beyond that, the government has to bear the cost, meaning that the Indian taxpayer has to shoulder the negligence of the private players. The Fukushima nuclear disaster of 2011 has already costed Japan more than $200 billion US, that is 16 lakh crores. Some estimate put the figure closer to $500 billion when long-term decontamination, compensation, economic loss, and health impacts are fully accounted for. The Chernobyl disaster of 1986 is estimated to have a cost up to $700 billion US over the decades. It costs nearly 58 lakhs crores. And what message does it send? That a private nuclear operator in India can walk away after paying 3,000 crore, while farmers, fishermen, workers, future generation, and taxpayers will pay the remaining price for decades. Sir, 3,000 crore is less than 0.02% of Fukushima total cost. It is not even a rounding error. It is an absolute nuclear disaster. We want to gamble with the lives of the people, the safety of our environment, and the future of our nation in the name of corporate-driven nuclear expansion. Sir, for whom are they bringing this draconian bill? Sir, I have clearly highlighted that this bill is a draconian bill and it is not required for the safety and security of this country. Sir, therefore, I urge this House to reject this Shanti Bill 2025 in the present form or refer it to the Select Committee as sought for the opposition parties or to a joint parliamentary committee. Sir, if peace, Shanti, is truly our objective, then let us invest in energy sources that do not carry the shadow of irreversible destruction. Let us choose a path that is genuinely sustainable, democratic, and safe. Therefore, sir, I would only request the House to reject the bill in toto and refer it to the Select Committee as sought for by the opposition party, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Dr. Sandeep Kumar Pathak ji. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयर सर। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का और फिर आपका इस पूरे सदन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, कई ऐसे बिल होते हैं जो देश की दिशा तय करती है। ये एक उन बिलों में से है जो इस देश की दिशा तय करेगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब हम पीछे पलट कर देखेंगे तो हमारी इस पर डिस्कशन होगी कि जब हम प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किए थे अपने न्यूक्लियर एनर्जी के सेगमेंट में, तो वो डिसीजन सही था या गलत था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आगे मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर काकोडकर को और सारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में कमज़ोर से लेकर शुरू करके मजबूती तक पहुंचाया, आत्मनिर्भर बनाया, उन सबको इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कई बारी हम अपने नियमों में और बातों में उनको भूल जाते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसका फाउंडेशन रखा। इस बिल में मोटा मोटी 2-3 चीज़ है, जैसे कि 1962
की जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और फिर 2010 की जो इस पे लायबिलिटी रिलेटेड जो एक्ट थे उनको ये ऑल्टर करके प्राइवेट प्लेयर्स को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस पे अलाउ कर रही है। आज आगे की इस पे डिस्कस करें, ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में हमने इतना एडवांसमेंट किया है, जैसे सोलर ले लीजिए, विंड ले लीजिए, हाइड्रो ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कई सारे ऐसे एनर्जी के सेगमेंट्स हैं, क्या इन सारे सेगमेंट्स में ज़्यादा अपना फोकस रखना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए? और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के डायरेक्शन में फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके आधार पर ये डिसीजन होगा? ऑनरेबल चेयरमैन सर, न्यूक्लियर एनर्जी आज की तारीख पे अगर आप देखें तो ये बहुत न सिर्फ एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, रिस्की है और सबसे महत्वपूर्ण जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो इसका कचरा निकलता है, उसको लाइफ लॉन्ग लाइफ साइकिल तक उसको सहेज के रखना पड़ेगा, उसके इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पोज ऑफ करने की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने इंस्टीट्यूशंस रिएक्टर्स लगा लिए और उससे एनर्जी बना ली। तो प्राइवेट कंपनीज को जब हम अलाउ करेंगे तब इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी तक मैं इस बात से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, संतुष्टिदायक है और गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे जिस भी लेवल तक आज पहुँचाया है, रीजनेबली हमारी जो सेफ्टी के नॉर्म्स इस पे रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे। ऑनरेबल चेयर सर, आज इस पड़ाव में कि हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का परित्याग कर दिया और जो पहले से टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग थे वो धीरे धीरे इसे छोड़ने लगे। आप जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी ने ये डिसाइड किया है कि वो फेज आउट करेंगे। आप इटली ले लीजिए, इटली ने डिसाइड किया है कि हम फेज आउट करेंगे। आप जापान ले लीजिए, जापान में एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे वो फेज आउट करने को प्लान कर रहे हैं। स्पेन, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो फेज आउट कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, ये उन कंट्रीज के लीग में हैं जो काफ़ी मात्रा में इनमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को भी इस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बिल लेके आए थे यहाँ पर, जब अमेरिका के साथ समझौता हो रहा था न्यूक्लियर एनर्जी से संबंध में ही, भारतीय जनता पार्टी की जो सामूहिक ग्रुप था उन्होंने इसका विरोध किया था। पूरे देश में बहुत बड़े सेक्शन ने भी इसका विरोध किया गया था और इसका कारण क्या था कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को इसमें रोका जाए, एक्सटर्नल ओवरसाइट बढ़ेगा, मार्केट लिंक्ड न्यूक्लियर फ्रेमवर्क होगा। तो फिर ये आइडियोलॉजिकल डिसीजंस थे, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि उस समय जो आपने विरोध किया था वो पॉलिटिकल था, इट वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल। हैड इट बीन आइडियोलॉजिकल देन टुडे डू यू एक्सेप्ट दैट यू हैव चेंज योर आइडियोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर थिंग? ऑनरेबल चेयर सर, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब उस पर प्राइड लेते हैं। आज हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस इस कैपेबिलिटी में हैं कि आज अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी उस मेच्योर्ड कंडीशन में, जिस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात ये कर रहे हैं, आज वो हम लगाने की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट प्लेयर को किस लिए लाना चाह रहे हो? क्या आप इसीलिए लाना चाह रहे हो कि सिर्फ पैसे की ज़रूरत है उस पर, या फिर आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट होगा? आज आपके देश के पास एक रिलेटिवली रीजनेबली वेल स्टैब्लिश्ड मैच्योर टेक्नोलॉजी है, क्या हम उसको इंप्रूव और इंक्रीज नहीं कर सकते? ऑनरेबल चेयर सर, हम विदेशों के एक मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट इंपोर्टिंग देयर रेगुलेटरी स्पाइन। हम जब तक रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट प्लेयर्स को आप बुला तो लेंगे बट आप चला नहीं पाएंगे, उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश की अगर रेगुलेटरी हिस्ट्री को आप देखें, रेगुलेटरी हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो आप यूरेनियम के खदान हैं, जैसे हमारे देश में राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है,
मोटा मोटे हम झारखंड और आंध्र प्रदेश में माइनिंग करते हैं। यूरेनियम के खान जहां पर हैं, जहां पर हम माइनिंग करते हैं, आप वहां के आसपास के लोगों के जीवन को जाकर देखिए। वहां पर एक रिसर्च हुआ था, सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 30% लोग हैं जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं। अबाउट 18 to 20% मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं या स्टिल बेबीज पैदा हो रहे हैं। स्किन के कैंसर के तो आप नाम मत लीजिए, मतलब इतना प्रिविलेंट है ऑनरेबल चेयर सर। वो फोटोग्राफ्स और उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं है। और सरकार के अंडर में ये माइनिंग हो रही है। सरकार जब माइनिंग कर रही है फिर भी जनता की हालत ये है। आप सोचो कि जब चारों तरफ प्राइवेट प्लेयर आके माइनिंग करेंगे तो इनका पूछ करने वाला कौन होगा? ये हमारा इतिहास है, हमारे रेगुलेटरी जो बॉडीज है, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। ऑनरेबल चेयर सर, आपको याद होगा भोपाल गैस लीक जो हुआ था यूनियन कार्बाइड वाले में, 40 साल हो गए, आज भी उससे हम उबर नहीं पाए हैं। इससे भी हमें समझ लेनी चाहिए हमारे देश में कि आप टेक्नोलॉजी के नाम पे तो कर देंगे, बट रेगुलेटरी रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जब तक नहीं रहेगा, किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। वाटर लेवल में जो यूरेनियम के कंटेमिनेशंस बढ़ रहे हैं, आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब में फरीदकोट लीजिए, आप चाहे भटिंडा के बेल्ट पे चले जाइए, फिरोजपुर के बेल्ट पे चले जाइए, दिल्ली ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, वाटर लेवल में यूरेनियम बढ़ रहा है और इसके डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कैंसर के नंबर ऑफ केसेस में दिख रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, न्यूक्लियर को तो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, आप थर्मल का ही, आप रेगुलेटरी बॉडीज की कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन ले लीजिए। हम कितनी बार वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार हमने किसी कोयले के या थर्मल पावर प्लांट को बंद किया हो ये बोल के कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे? क्या आपने कभी जो कोयले की जो थर्मल प्लांट है उसके आसपास रहने वालों से जाकर पूछा है कि क्या आप ये चाहते हैं? जहां भी ये ओपन हुआ है, जहां भी ये खुला है, अस्थमा, कैंसर, यही प्रॉब्लम है। हम कोयले की टेक्नोलॉजी जो है उसको तो अभी, जो मैच्योर टेक्नोलॉजी है उसमें तो अभी तक हम कोई इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी लेकर नहीं आ पाए हैं, वहां पर हमारी कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशंस नहीं हो पाए हैं। तो हम न्यूक्लियर कैसे करेंगे? कैसे न्यूक्लियर करेंगे? तो प्रश्न आज हमारे देश के सामने ये नहीं है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपके रेगुलेटरी बॉडी इतने इंडिपेंडेंट और स्टैट्यूटरी मैच्योर्ड हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है, आज वो ले सकते हैं? आप पॉल्यूशन ले लीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, दिल्ली में कूड़े का एक पहाड़ है, वो हमसे नहीं उठ रहा है। हम नदियों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, नदियां हमसे क्लीन नहीं हो रही है। कहां से अफ्लुएंट्स आ रहे हैं किसी को नहीं पता, कहां अफ्लुएंट, इतने दिन हो गए। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस ऑनरेबल चेयरमैन सर, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल, अंडरस्टैंडिंग एंड द रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, रेगुलेटरी बॉडी की इंडिपेंडेंस। ऑनरेबल चेयर सर, जो नया बिल है 2025, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो फुल्ली स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी हमें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग उस पर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्लोजर होने चाहिए। क्लीन इन्फोर्समेंट एंड शटडाउन पावर्स होने चाहिए। क्लैरिटी ऑन लायबिलिटी एज वेल। We are importing a private model, again I am repeating, without its regulatory spine. Honorable Chair Sir, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जहाँ पर भी हुए हैं, चाहे आप चेरनोबिल ले लीजिए, चाहे फुकुशिमा ले लीजिए या कई जगह पे ले लीजिए, ये इसलिए नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इसलिए हुआ क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, रेगुलेशंस में वहाँ पे फेलियर हुए हैं। तो ये कहना कि टेक्नोलॉजी आएगा, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंजीनियर सक्षम नहीं, हमारे देश के इंजीनियर सक्षम है, साइंटिस्ट सक्षम है, वो उसको हम फेल करते हैं अपने रेगुलेशन से, अपने रेगुलेटरी जो पावर्स हैं, लॉज से, और वो फेलियर आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हमारे पार्लियामेंट से जो कानून बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, वहां से है। ऑनरेबल चेयर सर, जो रेगुलेटर है अभी जो प्रपोज्ड है, इसमें AERB जो है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो बनाए हैं, वो अच्छी बात है, एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। यहां पर जो ऑपरेटर है, जो रेगुलेटर है और जो प्रमोटर है, तीनों का तीनों एक ही है। ये कैसा संभव है कि जो पुलिस है वही चोर है? तो आप जिसको पुलिसिंग कराना चाह रहे हो उसको आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। अमेरिका में NRC है जो इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूके में ONR है, इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी है। कनाडा में CNSC है, इंडिपेंडेंट है, और दे ऑल report to the parliament. Honorable Chair Sir, I would urge through you that this also nuclear oversight should also be reporting to the parliament. Sir, thank you sir.
जो just 2 minutes, 2 important points सर, जो सेफ्टी के मेजर्स हैं हमारे देश में, आप देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम कभी पब्लिक में नहीं लाते। कभी आपने देखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी के डॉक्यूमेंट को पब्लिक लाते हुए? हमारी ये कमी है। आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी में लाइए। इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है नए बिल में। आप यूएस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए, जिनका रेफरेंस और उदाहरण हम देते हैं कि देखो वो कंट्री कर रहे हैं, बट वो अपने सारे सेफ्टी के डॉक्यूमेंट पब्लिक स्क्रूटनी में लाकर रखते हैं। पुराने जो एजेंसीज हैं, पुराने जो रिएक्टर्स हैं, उनको जब आप वापस से रिलैक्सेशन आप देते हैं तो भी पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं आता। स्टेज लाइसेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट सर, और फाइनल आई कंक्लूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर। जैसे अभी पूरा इंटरेस्ट किस पे है? थोरियम पे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एबंडेंस में थोरियम है और अब पूरी माइनिंग जो शिफ्ट होगी थोरियम में, तो क्या इस बिल के माध्यम से, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बिल में क्लैरिटी नहीं है, मैंने कई बार इसको पढ़ा, क्या इस बिल के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को थोरियम की खदान को देने की प्लानिंग है? इसलिए ये बिल हम ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट को हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला। Thank you, sir. I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025. एक मिनट मिस्टर अयोध्या रामी रेड्डी आला, प्लीज 1 minute. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 18th of December 2025, 1. has adopted the following motion, that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the budget session 2026. 2. Pass the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. माननीय अयोध्या रामी रेड्डी आला, your time starts now, please. Yeah. So, sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025. Sir, for decades, nuclear power in India remained largely restricted to government bodies. This bill recognized the aspirations of 21st century of India, especially energy security and low carbon growth, requires bringing in private investment and regulatory clarity. At the same time, it rightly retains central government control over strategic and sensitive activities, ensuring national security and technical integrity. This bill recognizes that nuclear energy is not limited to just electricity alone, but also towards regulation of radiation facilities used in medicine, diagnostics, cancer therapy, agriculture, and industrial applications, which will help standardize safety while enabling innovation and wider public benefit. However, sir, while we support the broad vision of clean energy, we cannot discuss any national policy without considering the real governance challenges that we will be facing. However, there are some key features of this bill which they're allowing private companies and government entities and joint ventures to build, operate, and decommission nuclear plants. Here I have some concern on the private companies coming into it. It also keeps sensitive activities such as fuel processing, high-level waste management, and enrichment safety under central government control. Very good. It introduces a dual authorization system, a license from center, and a safety authorization from AERB. Very good. It also gives the AERB statutory powers to inspect, enforce safety complaints, and coordinate with international nuclear regulators. Very, very good. Regulators, it also regulates radioactive substances and radiation facilities used across the healthcare, research, and industry. Good. It updates the nuclear liability regime, capping operator liability and having the central government and assuming the residual liability. But sir, capping the liability on a private operator
I am not for it. It sets up a nuclear damage claims commission to handle compensation without civil court intervention. Very good. However, sir, there are some challenges. The nuclear projects can succeed only when people have confidence in the system. However, this bill does not clearly mandate community consultation, transparent information sharing, and continuous engagement with people living around the nuclear facilities. Sir, there are also some ground-level emergency response gaps we saw in this bill. In any nuclear incident, the first responders will be the district officials, hospitals, and local communities, not the authorities sitting in Delhi. Yet the bill does not mandate emergency drills, radiation-specific medical preparedness, or public awareness programs. Given the present state government's poor track record in routine disaster management responses, these gaps become even more alarming. The nuclear waste remains hazardous for decades and even centuries, but the bill does not clearly fix long-term responsibility after the plant decommissionings. If private operators exit and state institutions remain weak, future governments and the citizens of this country may be forced to manage unresolved environmental risks, an issue of intergenerational injustice. We certainly need to take into account of the environmental concerns that are going to come out of the nuclear waste management. Sir, coming to the benefits that we have to give to the host states which are permitting these sort of facilities. Sir, while the bill centralizes the key powers, it does not sufficiently strengthen preparedness or negotiating capacity at the state and district levels. If private entities are allowed to operate nuclear power plants, host states must be assured of clear and tangible benefits. The bill is largely silent on guaranteed local employment and priority power allocation or structured community development. Further, the bill creates a nuclear damage claims mechanism. It does not clearly explain how affected communities will be informed, represented, or assisted in accessing compensations. Without clear benefit sharing mechanisms and transparent participation, nuclear expansion risks becomes extractive rather than inclusive. Sir, introducing private nuclear operators without strong center-state coordination is very dangerous. I would want that the Honorable Minister to take note of this. Sir, therefore, on behalf of my party, I respectfully suggest that Government of India, for atomic energy, we must have our clear strategy for next 25-50 years. We should also have the right kind of structuring. How these projects are going to happen. Even if at all it has to happen, you can bring in the public-private participation where government must be partner with the private investors. Then we should also clearly mention the deliverables. The deliverables around this, on every front. See, whether it's not just power generation, but also beyond that, how we are going to take advantage of this particular activity to take our country to the next level. And also a right kind of review mechanisms and the right kind of audit mechanisms, especially AERB we are bringing in, but it needs to be strengthened a lot. We need to really get into that, and with that also the union government should make mandated state-level consultation frameworks before citing the nuclear projects with legally binding stakeholder engagement protocols. Also, disaster management and public health readiness plans integrated with the local governments, especially for states with coastal populations and industrial growth aspirations, must be brought in. A transparent benefit sharing model should be built into the licensing regime so that host regions gain tangible social and economic advantages from these nuclear investments. Sir, once again, I want to say that strengthening, because this is atomic energy, as some of our other members have mentioned, it's a very, very sensitive subject. We, from the government side, if you look at on the environment side, whether it is air pollution or water pollution, solid waste management, even atomic waste management,
If you see, we have to do a lot of work. So I would strongly recommend that on these particularly waste management areas, environment protection areas around atomic energy plants, we must really put ourselves furthermore thinking and thought process and strengthen the AERB to next level. With these recommendations from YSR Congress Party, we support this bill. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मेरे नेता नवीन पटनायक तथा बीजू जनता दल की तरफ से मैं इस बिल पर, इस शांति बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि बहुत से वक्ताओं ने अपना बात रखा यहाँ पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त ये एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका शुरुआत हुआ। ये एटॉमिक एनर्जी शांति के लिए हमारा देश बनाना चाहता था और बनाना चाहता भी है भविष्य के लिए। 1974 में मई 18 तारीख को जब पहले टेस्टिंग हुआ हमारे देश में, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब पहला टेस्टिंग हुआ, सारा दुनिया में तहलका मच गया कि भारत ऑटोनॉमिक टेस्ट कर चुका है, लेकिन हम शांति के लिए करना चाहते थे। उसके बाद मई 11 और 13 को 1998 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये टेस्टिंग फिर से हुआ हमारे देश में। और उस वक्त उसको लीड कर रहे थे, मेन कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल कोकदर, ये भी उनके साथ थे, वो कोऑपरेट किए थे, तब जाके ये टेस्ट हो चुका था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए उड़ीसा में एक रेंज प्रतिष्ठा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू बाबू से मिले 90s में, और उन्होंने चाहा कि उनको आइलैंड जरूरत है जहां पर वो टेस्टिंग करेंगे। तो बीजू बाबू तब उन्हें कहा था कि अगर यहां से आप चाइना तक अगर पेनिट्रेट कर सकते हो, मार सकते हो, तो मैं आपको जगह दूंगा, मिसाइल ऐसा मिसाइल बनाओ। तो अब्दुल कलाम जी ने उनको वादा किया था कि मैं जरूर ये काम करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल आ रहा है, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा देगा, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी एंटर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अगर एंटर करेंगे, तो सुरक्षा के बारे में बहुत हमको सचेतन होना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सुरक्षा कैसा किया जाएगा, सुरक्षा को खास करके मुआवजा कैसा दिया जाएगा। अगर कोई घटना घट गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसका कैसा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये है सबसे बड़ा बात, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बहुत खतरनाक होता है, खास करके पर्यावरण, लोगों का जान भी प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बिजली बनाने का एक माध्यम भी है हमारा। जब दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कि आप जानते हैं, जब भारतवर्ष में दुर्घटना हुआ था 1984 में 3 दिसंबर को, यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ था।
16,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी अध्यक्ष महोदय, और बहुत से लोग अपंग हो गए थे। कई सालों तक बच्चे भी अपंग पैदा हुए। उसका मतलब ये बहुत खतरनाक भी है, जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। तो सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको इसको बहुत ध्यान से इस बिल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ख़ास करके उन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर अगर कुछ घटना घट गया, अगर कुछ दुर्घटना घट गया, तो लोगों को मुआवजा कैसा मिलेगा उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि यूरेनियम कार्बाइड के वक्त जब दुर्घटना घटा तो बहुत से लोग आज तक कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको आज तक भी मुआवजा नहीं मिला है। कई साल हो गया, 84 मतलब कई साल, 35-40 साल हो गया वो मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग को अभी तक मिला नहीं। इसमें कुछ नियम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दुनिया भर में ऐसा बहुत से जगह दुर्घटना हुआ है, जैसा चेरनोबिल में 1986 में दुर्घटना हुआ, फुकुशिमा में 2011 में दुर्घटना हुआ। तो परमाणु कचरे को खास करके साफ करना भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो परमाणु कचरा अगर रह जाएगा तो भी वो बहुत खतरनाक साबित होगा। जैसा कि कहते हैं छोटा सा बैटरी को भी कहते हैं कि बैटरी को जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ने के बाद भी उस बैटरी के अंदर जो रहता है वो भी खतरनाक होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अध्यक्ष महोदय, परमाणु कचरा को कैसा साफ किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जैसा उड़ीसा से आता हूँ, मेरे उड़ीसा राज्य में मछुआरे हैं, किसान हैं, बहुत जंगल है। ऐसा विभिन्न राज्यों में भी मछुआरे हैं, किसान हैं, बहुत जंगल है। उस जंगल में बहुत से जानवर भी है। अगर इस तरीके का अगर कहीं अगर दुर्घटना, भगवान करे दुर्घटना ना हो, अगर हो गया तो उसका मुआवजा कौन देगा? इसमें एक क्लोज ऐसा भी रखना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका मुआवजा उन लोग देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में ये बिल पास करा जाएगा तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगा। 2047 तक 100 गीगावाट बिजली चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो। हम लोग विकास के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बिल आने के पहले मैं सोचता हूं कि ध्यान से इसको देखा जाए, हो सके तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भी दिया जाए, ताकि इसको पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से जांच हो। उसमें बिल में अगर कोई जरूरत हो तो उसको फुलफिल किया जाए। अगर जल्दी में हम पास कर देंगे तो लोगों का जान और माल का तो खतरा है, जानवरों का भी जान और माल का खतरा, उनका भी जिंदगी दांव पे लग जाता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री से, यहाँ पर बैठे हैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सोचिए, ध्यान से चिंता कीजिए, और इस बिल को कैसा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए और डिस्कशन हो, और जो भी वहाँ पर खामियां अगर होगी तो इस खामियां को कैसा पूरा किया जाए, ये आप लोगों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को फिर से देखा जाए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। इस चर्चा में मैं अपनी कुछ आपत्तियां अपने दल की ओर से दर्ज कराना चाहता हूं। आपत्तियां हैं, आलोचना है, और उसके पीछे मकसद है कि संसद की इमारत इसीलिए बनी है। महोदय, हाल में मैंने एक किताब पढ़ी गोपाल कृष्ण गांधी जी की, द अनडाइंग लाइट। पता नहीं मंत्री जी ने वो किताब पढ़ी या नहीं, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बड़ा लंबा हमारा एक इतिहास रहा है। राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू और बाकी अन्य के बीच में कई खत, कई तरह के पोजीशंस शेयर किए गए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतिहास में आजकल वैसे भी दौर चला हुआ है काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन का, तो एक सही के इतिहास से कुछ सबक ले। सर, माननीय सभापति महोदय, न जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है
जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है, उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू इस शांति के पीछे हैं। यह मैं इतिहास के आकलन के लिए, सदन के आकलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के आकलन के लिए छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय आपके समक्ष कि हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप से कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि जहां रिस्क कैटास्ट्रोफिक होने की संभावना है वहां राज्य अनुपस्थित ना हो। मैं राज्य की अनुपस्थिति का दस्तावेज देख रहा हूं एक अदृश्य शक्तियों के प्रभाव में। मैं माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं छोटा उदाहरण दूं, चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल न्यूक्लियर आउटपुट में 16% है, फ्रांस का 14% है, रसिया का 8% है। मैं 3 ले रहा हूं और इन तीनों में स्टेट ओनरशिप की प्रबलता, प्रमुखता है। उसी के इर्द गिर्द ये पूरा प्रोग्राम है। हां, इसमें एकमात्र अपवाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 80% निजी हाथों में है। अमेरिकन मॉडल कैन नॉट बी considered as the best practice model for my country, keeping in view the inconsistent position of a country called United States of America. अगर कोई अपमान होता है तो वो पक्ष का नहीं, हमारा भी होता है, इस देश का अपमान होता है, तो हमें वो चीजें रखनी चाहिए थी। क्या हमने इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस सोचा? जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारी जो जानकारी है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बीते कई वर्षों में फ्रांस और रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही थी स्टेट ओनरशिप के मॉडल को और प्रबल बनाने की, और प्रखर बनाने की, और ताकत देने की चल रही थी बातचीत। इसके दस्तावेज है। उस पर यह विराम लगा देता है, ना जाने कैसे। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है। हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन हिस्ट्री में डिलीट बटन का प्रावधान नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय, ट्रांसपेरेंसी के पूरे क्लॉज से पता नहीं क्या दिक्कत है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। अब इसमें कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, सेफ्टी वायलेशन और रेडिएशन लीक्स को लेकर के। सर, एक चीज तो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं इस सरकार के बिलों में, और कभी कभी मैं सोचूं कि इस पर अगर कोई कंटेंट एनालिसिस हो। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर अटैकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म। आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? देखिए सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आती है ना, तो टेम्पटेशन बहुत खतरनाक आते हैं। उन टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल, वो नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द बिल्स सरपास दैट, इट्स अटैक। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या यह विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा, जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। सर बस 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड। सर, आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी को एक चार्टर मिला था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में तब्दील हो गई।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट और निजी से विरोध नहीं है, लेकिन सर देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड समृद्धि के 5 टापुओं के आगे जाकर के आत्मसमर्पण न कर दे, इसका बचाव इस संसद को करना है। एक नहीं, 2 नहीं, सब मिलके करेंगे। अन्यथा माननीय उपसभापति महोदय, हम जिस बिल को शांति के नाम से पास कर रहे हैं, कहीं राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए वो ओम शांति का क्षण न हो जाए। जय हिंद सर। डॉक्टर एम थम्बी दुरई। Honorable Deputy Chairman, sir, I raised today to participate in the discussion on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025 on behalf of ADMK party under the leadership of respected General Secretary Edapadi Palaniswamy, sir. ADMK has always stood firmly in support of scientific progress, clean energy initiatives, and national self-reliance. Sir, I would also like to place on record our deep appreciation for India's nuclear scientists, engineers, and researchers whose tireless efforts, often under international constraints, have strengthened India's position as a responsible nuclear power. ADMK salutes their dedication and service to the nation. Sir, states like Tamil Nadu, which has host important nuclear installations such as Kalpakkam and Kudankulam. The center's continued engagement with host states has helped address public concerns and strengthen confidence in the nuclear energy. In the Kudankulam, the people are opposed in Tamil Nadu. There are still agitations going on. The concern is there. And central governments take care of that, their interest, which ADMK is always insisting. We are supporting the Kudankulam people, which they raised. The central must give the interest. Sir, ADMK particularly welcomes the government focus on cooperative federalism. While nuclear energy is a highly specialized sector requiring strong central coordination, the union government has consistently worked with the state governments on issues of safety, energy, emergency preparedness, and local development. Sir, in this, I want to respond one matter. Recently, our ADMK member, when he spoke, DMK member spoke, Wilson spoke about the privatization of the nuclear energy. He said, sir, I am also appreciating his concern, the state's nation's security. I want to bring to the notice of the House, whatever the spectrum. Spectrum is also very important thing for the thing. It's a critical thing. I am telling, sir, what is? Spectrum is on the bill, no, only that this is will go on the record. When that, sir, during UPA government, the spectrum action by the DMK government. That will go on but the record. they are telling now that nuclear energy is the critical thing. I am telling spectrum is also a critical thing for the nation. Security is involved in that. Please, how can they stand? What kind of? No, I'm telling that what. Please speak on the bill. I am coming to the point. No, nation security. Nation security of the nuclear energy. That point I'm telling. Same case spectrum also. Nuclear important. No, I'm spectrum. Nation security involved. During the action, what happened? Not go on the record. Please. 2G spectrum scandal is a very famous scandal. Not go on the record. We are not discussing that. What happened? Whatever happened, you know we that. are not discussing that. Why? When they are criticizing the government, nuclear energy, private sector, I appreciate that. How can the DMK government, UPA don't given them spectrum to the private sector? That is the point I'm telling. Not go on the record. This is the way they are continuing double standard they are making, sir. I am telling, sir, I am telling this is the point very, very important. I am telling the point, why I am telling about the state security, nation security is very important, which DMK concern. No, you speak I on am the telling that concern I am raising to that also.
when they are opposing this, when they are opposing this bill, when they are opposing this bill, only that will go on the record. I'm telling the point, sir, when they are opposing this bill, national security. What about the spectrum is another important factor, which how they give an auction and into the jail. The people in the minister went to the jail also. That is a scandal, but the case is still pending in the High Court. On the bill, that will not go on the record. No. Cases not. I don't want to prolong the case. Speak on the nuclear energy only. That will go on the record. I'm only telling DMK double standard. It will not go on the record. They're doing this kind of thing. The people of the North Tamil Nadu know very well. This kind of scandals have happened. That has to be stopped. That is a scandal. That is a scandal. Everybody is there. That is why I'm telling, sir, nuclear energy, safety is very important. Safety is important. Government has already specified what are the measures in the bill, how to give the safeguard to the people. Betty, I have already told. Please take your seat. The bill has given what are the safeguards as to given, appreciating that point which is said. The same time, whenever discussing opposition parties, must not play the double game. Speak on the bill. Double game must not say. Speak on the bill. Saying, same Congress and the DMK did all this. No, that will not go on the record. Why no, they are that will not go on the record. Sir, No. Sir, I'm telling this in the bill. I'm speaking on the bill. Nation security is the most important. No, but this I'm is not speaking right. that the scandal is that I'm requesting the Honorable Prime Minister, take action. It will not go on the Take record. what happened previously. No, it will not go on the record. Spectrum scandal must be taken action. This is not good. Punish them. This The is not people good. of Tamil Nadu coming election going to be we have fitness supply for this DMK government. Srimati Sudha Murthy. I have already spoken. Trichuji, I have already. Thank you, sir. Whatever he has spoken on the bill, only that will go on the record. No, please. Sudha Murthy, please. Thank you, sir. 1 minute. Yes. Yes, still. Yes. Sir, when you say it won't go on record, it won't be in the records. But the video is going. That will be on YouTube. Sir, So the mic should be switched off, sir. No. And everyone is enjoying whatever he's speaking. This is not the forum for that. We want to come to Tamil Nadu. Come and tell us in Tamil Nadu. Come and tell us in Tamil Nadu. Please take your seat. Please take your seat. Tiruchuji, you are not ready to listen to chair. Please, 1 minute. You, please. Yes, Tiruchuji has raised a very significant point. Please take your seat. Please, nothing is going on record. No, please take your seat. No, I'm not allowing. It is not going on the record. No, it is not going on record. Honorable members, it is not going on record, Mr. Thambidurai. Please, do not force me to warn you. You are a very senior member. Please, no, I'm not allowing. माननीय सदस्यगण, तिरुचि शिवाजी ने प्लीज, माननीय सदस्यगण, तिरुचि शिवाजी ने एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट उठाया है. ये हाउस की सारे पक्षों से समस्या है. आपको चेयर बार रूल्स ऑफ प्रोसीजर से चलने का आग्रह करता है और सभी पक्षों से मैं देखता हूं यू क्रॉस द बॉर्डर लाइन, देन यू रेज द क्वेश्चन विच वेरी वैलिडली हैज रेज्ड. इधर से भी होता है, उधर से भी होता है, इधर से भी होता है. मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करें. सुधा मूर्ति जी, प्लीज स्पीक. Thank you, sir, giving me an opportunity to talk on this bill. Let me remember India's Bhishma Pitamaha, Homi Bhabhaji, and then continue this one. Sir, for Vikshit Bharat 2047, we require energy independence. Without energy, nothing is possible. Sun is another source of energy. I call nuclear energy the another source of, a great source of energy. That's the reason the folk story says when Neil Bohr first time saw the nuclear energy, he said, Aham Brahmasmi. It is the story or it may not be true, but this is what I've heard. So there are many ways to get energy. One is hydel, second one is coal, third one is wind, fourth one is nuclear energy. Sir, in solar energy,
you do generate a lot of energy, but you cannot store as of today for a long time. And after 2-3 decades of time, when it goes, it's not working, it's very difficult to discard that. That is the main problem in that. In case of hydro energy, olden days it was easy. Today with the new geopolitics, building a dam is not that easy. And with the climate change, getting the water and using that water is not that easy, and it is not for a large energy. Coming to coal, yes, coal energy you can use it, but it gives you a lot of coal emission, which is not good for the environment, so it is not really recommended, but if there is no other go, we have to use. Next comes wind energy. Wind energy has a limitation. It is intermittent. All the time you don't get good wind. Second thing, transmission is a problem. When looking at all these points, as of today, given set of circumstances, nuclear energy, power generation through nuclear generation, energy through nuclear power, it is more acceptable. I don't say it's the best, but it is more acceptable in today's scenario. Sir, I just want to refer one point which my honorable colleague made, that East India Company came and it all happened. Sir, even the same history I want to refer and tell him. East India Company did come in 1630 by that time, and they established a small shop in Surat. But India was not what India is today. Today's India is entirely different. We are all one today. Even though we fight in all these things, on a lighter side, we are all Indians, irrespective of the state. It is not easy to open a shop again in Surat or any trade, and they can occupy India. It is not possible. Sir, privatization is not, everybody is saying privatization is bad. No, sir, privatization is not a bad word. Because of privatization, we are creating wealth. Because we are creating wealth, there is reduction in the poverty. There are a lot more opportunities in privatization. The quality of the material in privatization is always good. So, I am all for the privatization. Sir, we are all grew up, at least my generation has grown up. The moment you think of Japan, World War II, think of Hiroshima, Nagasaki, there was a big bomb, and then we always think the effect of that, many generations, etc. But we never think the use of nuclear energy in other way. That means it can be used in medicine, in agriculture, in many other fields. It is like, in a way, the kalparuksha, I say, in a modern medicine, and all those things we are using. So it brings hope. It brings, nuclear energy brings hope. It brings peace. And that is an apt name, sir, you have given as a Shanti Bill, because it is the source of peace and hope for a better future. Sir, India has a vast uranium reserve, and it's sustainable in the long-term solution, and it will take a little more time to do that. Sir, people say we should have public sector to do this one. Jairamji is not here. Sir, public sector, you require a lot of money. How to finance that? That's the reason privatization is needed. And it is not that you have to give everything to them. There's a controlled privatization is there. It is partially private, and main control is still with the government. So we should not worry, it becomes individual one, and we can't do anything. No, don't do that. Let us start always with a positive mind, with hope, and we will do this one. Sir, if we want to go to Prime Minister Dream, Viksit Bharat 2047, then we require power at that time. Today, the installed power generation through nuclear energy is only 8.8 gigawatt. But we have to achieve 100 gigawatt. And to get 100 gigawatt, it won't happen in one day. 1 year, 1 decade, it's not possible. It is 2025, and the 23 years are left. And we have to start somewhere, sometime, the first step. And if we start building now, over 23 years of time, it requires time. It requires technology. It requires a lot of planning. It requires so many other sources of energy. So we have to start new privatization, this bill, so that we'll be able to get 100 gigawatt of energy at 2047. There's nothing wrong that, of course, we have to consider our Swadeshi, everything is right. But there is nothing wrong in looking around for the best practices around the world. Rigveda says, Ano Bhadrani, the very famous saying, it says,
let all noble thoughts come from all sides of the world, and we will accept the best in that, and according to our situation, we should modify and use it. There's nothing wrong. So there are many countries like UK, may not be much in there, but France, Japan, Korea, and America. Of course, Germany has a different strategy, that is their own country's strategy. We will not take into that. There are 5 countries, for example, I am taking, and every country has some best practices. Like France has, it is using the waste as a resource again, and Korea has a standard modularization. America is completely privatized with 80%. So for our country, what is the best as of today we should use? And in the process, I want to give a small suggestions that we should also use the waste as resource like France, and we should also make a model in such a way that it should be standardized so that it becomes easy to operate. Third one, sir, we can have a robust regulatory system with the Atomic Energy Regulated Board where safety is above the profit. Sir, I would really like to recommend this. I would like to recommend this bill because it helps to grow, it helps to innovate, and it makes us dependable. The small module reactors save time, space, and it can be closer to the work area, unlike before. Sir, there is a very famous saying, how we should implement this? We can implement this with the affection of a mother and the discipline of a scientist, so that we are benefited and we should go ahead. Thank you very much, sir, giving me generous time. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Honorable K.R. Suresh Reddy ji. Deputy Chairman, sir, this is an important piece of legislation for a rapidly developing nation like ours with increasing electricity needs. As the bill relates to nuclear power, on behalf of my party and myself, I take this opportunity to appreciate the efforts of all our scientists, nuclear scientists, and their staff who have got us to this stage where India can be proudly claimed as one of the strong nuclear nations. Sir, the bill of time, I would like to understand from the Honorable Minister. When the bill came up, it was primarily meant that this bill will add a lot of electricity to our growing needs. And this has raised a lot of hope, especially in the rural areas. As you are aware, sir, India is an agriculture-based country. But when we look at the need of electricity and the wastage of natural resources, it has been said that almost 35% of the river water, rainwater goes waste into the sea, for the reason being that it is not able to be tapped because of the terrain where they need a lot of electricity to pump water. If this bill and in the due course can it achieve the goal of ensuring these far-flung areas who are deprived of electricity but who have natural resources, and if they get access to the power which is envisaged in this bill, then definitely India would be reaching greater heights and also getting our food security assured, sir. The second part, when we look at the bill, sir, then we look at Viksit Bharat, where is the theme for the government, and as part of that, industrialization is one of the main keys, sir. Now for industrialization also, power is a key requirement, and we have noticed a lot of small enterprise suffering. Small enterprise not in major cities, but in smaller towns, India has gained a lot of enterprise. But if we can create the facility, infrastructure in smaller taluka level, district levels, a lot of enterprise can come, and this definitely can reach the goal of Viksit Bharat as you are planning. And then, of course, the changing times, the bringing in of technology. I'm talking of the pros of the bill, sir, before I come to the cons of it. The pros say that, India is rapidly developing data centers, artificial intelligence. These are all very good coming up, and India is becoming a center for these. And obviously, these centers require huge quantum of power, which, assuming this bill would be one of the sources,
to create that requirement. And then, of course, our climate commitments for low carbon also is fulfilled through this bill, sir. But then there are concerns. There are concerns about safety. The glaring deficiency of this bill, sir, is the complete omission of the environmental liability. It contradicts India's international commitments, which we have made at the Paris Agreement and then also the Principle 10 of the Rio Declaration. It also undermines Article 21 of our Constitution, the right to clean and healthy environment. That is in question if the bill is introduced in the form where it is being debated, sir. Significant portion of nuclear mining also is happening in tribal areas. Vice Chairman, sir, you are aware that tribal areas, especially Jharkhand, and the kind of contamination, the cases of cancer which came up through water contamination and other reasons, has been an area of concern. They did try to bring in Nalgonda also, that was stopped. So fundamentally, I would request the bill be passed to the select committee. And if it doesn't go to the select committee, sir, I have a suggestion. Then the responsibility lies on this house, it lies on the chair. Then the Committee on Environment, Science and Technology should continuously monitor the bill and its implementation. Thank you, sir. Thank you, Suresh Reddy Garu. Honorable Member A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, let me start my speech with a mantra. Loga samasta sukhno bhavantu. In the light of these lines, this mantra, myself and my party strongly oppose this bill. Sir, this bill is against the humanity. So for my country, for the future generation, for the entire earth, for the humanity, we are opposing this bill. Sir, why we are opposing this bill? Sir, this bill is clearly protecting the interest of private players, especially the interest of suppliers. The second one is that the major thing, the prime thing is that liability gap. The liability gap is not sufficient. It must enhance. This is my party's demand. Sir, respected sir. Sir, Section 4, Clause 1, Clause B of the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, which was passed by the second UPA government, clearly states that the operators are liable for nuclear damage arising from nuclear material coming from or originating in that nuclear installation. The most dangerous aspect of this bill is that it selectively omits the liability of suppliers. This is the highly objectionable, sir. Sir, Section 13, Clause 1 states that the maximum amount of the liability in respect of each nuclear incident shall be the rupee equivalent of those 300 million special drawing rights or such higher amount as the central government may by notification specify. This is exactly the same approach adopted in the second UPA legislation. Sir, now I am going to a further section, another section, Section 14, Clause 1, Clause A states that the central government shall be liable for the amount by which the liability exceeds the amount specified for an operator in the second schedule. Sir, in effect, public money is being used to shield private operators. Sir, I would like to recollect a memorable speech in the very same house, Rajya Sabha. Then there in the opposing side, the opposition side, Arun Jaitley was the opposition leader of this house. Quote, today, this is the words of Arun Jaitley, quote, today you are in power, tomorrow somebody else can be in power. Why must the government of India take the liabilities of mistake created by some third party? Unquote.
this quotation, this words by your leader Arun Jaitley in the very same house. So I would like to ask the treasury bench, are you still with that position? Are you still with that position? Sir, I would like to recollect another legendary leader, none other than my leader, a legendary parliamentarian and the leader of oppressed, Comrade Sitaram Yechuri. He spoke in the same house, in the same day, quote, even after 26 years of the Bhopal accident, the entire elected political class of the country has let down the victims of Bhopal. Let down is because we did not have adequate liability laws. We, the left, sir, please, sir, I'm going to conclude. We, the left, have been raising this issue in the House and in the other House even since 1984. It was those who were in the government from one side or the other who let down the people due to the absence of strong liability laws. In the same House, Thank you, Mr. sir, in the same House, my party, Communist Party of India, marched repeatedly asking for the strong liability Thank laws. you, Mr. Strong Raheel. liability laws. So, just I'm going to conclude. Sir, only one thing I would like to conclude, that the clause 81 of the bill states that no civil court shall have jurisdiction. So, Okay. what is what is happening in our country? So, once again, let me conclude. I would like to repeat. got your Loga point. Thank you. samasta sukhno bhavantu. Point is got. Don't undermine the peace of the bill. Don't undermine Yeah, thank you, don't Mr. Raheel. undermine the future of our next generation. So I strongly oppose the bill and kindly send back the bill to the select committee. That is my opinion. Thank you very much. Now, Honorable Member Professor Ram Gopal Yadav. प्रोफेसर राम गोपाल यादव का नाम आया कहाँ बोले कहाँ नाम तो लिया नहीं उन्होंने धन्यवाद श्रीमान बहुत कम समय है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही बात करना चाहूँगा। नंबर एक, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और विरोध क्यों करता हूँ? जो 2010 का एक्ट था लायबिलिटी का, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि न्यूक्लियर डील के बाद ये बिल लाया गया था और एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। इतना महत्वपूर्ण बिल था ये और आज भी है कि इसको भी स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था। मैं उस बिल की स्टैंडिंग कमेटी में था। न्यूक्लियर डील पर जब चर्चा हुई थी वो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव एक इस तरह का दिन था देश में। ये लग रहा था कि आज शाम को सरकार मनमोहन सिंह की बचेगी या नहीं बचेगी। उस वक्त भी मैंने कहा था उसमें कि ये हमें हर वक्त जो यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो शांतिमय प्रयोगों के लिए, और ये तो कह नहीं सकते थे कि वेपनाइज करने के लिए भी है, लेकिन ज़रूरत तो है ही, असली ज़रूरत थी वो। तो उसके लिए था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडार है थोरियम का कि अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएं न्यूक्लियर ये यूरेनियम 233 और उसके सहयोग से, तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत दूसरों से यूरेनियम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनरिच्ड यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जो है, जो एटम बम बनाने के लिए और वेपनाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका जो बाहर से ला रहे उससे काम चलता रहेगा। लेकिन उस दिशा में हम बढ़े नहीं आगे। और ये कहना कि न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से हम सारी उसकी पूर्ति कर लेंगे, अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है? 2-3% से ज़्यादा नहीं। हम कितना ही कोशिश करें तब भी बहुत जल्दी एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास जो अभी हम है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं आ सकता।
लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं। संदीप जी ने बताया था, मैंने तो स्वयं देखा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में नरौरा में न्यूक्लियर रिएक्टर है, पावर रिएक्टर, वहाँ से जो रेजिड्यू जाता है, जो ट्रकों में जाता है, पुलिस के संरक्षण में जाता है और 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से वो ट्रक नहीं चल सकते। इतना खतरनाक होता है कि लोग डरते हैं जब वो रेजिड्यू वहाँ से जाता है कि कहीं कोई बात न हो जाए। तो इसमें आप जो हटा रहे हैं लायबिलिटी का, सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी का अगर नहीं होगा तो उसका कोई लाभ ही नहीं। इसके माने आप प्राइवेटाइज ऐसा करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो, कहीं किसी तरह का जैसे चेरनोबिल में हुआ था या जापान में हुआ था, ऐसा हो जाए तो सब पब्लिक के ऊपर आ जाएगा। जितना नुकसान होगा टैक्स पेयर जो है उसको सब पे करना पड़ेगा। तो आज तक ये लोगों की, आम लोगों की समझ में आता है। सड़क पर चलने वाला आदमी भी कह रहा है कि लगता है हमारे यहाँ का जो भंडार है थोरियम वगैरह का, वो किसी को देने के लिए साजिश की जा रही है और घुमा फिरा के ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सप्लाई करेगा, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर करे या उससे संबंधित और कोई चीज़ करे, उसकी गलती होने पर भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, उसको कोई कंपेंसेशन ज़्यादा देना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार में बैठे हुए लोगों से ये प्रार्थना है कि इस पर एक बार विचार करें और सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को भेजें, क्योंकि ये जनता के हितों के खिलाफ बिल है जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए लाया जा रहा है। ये आम लोगों में इस तरह की चर्चा है और वो वास्तविकता भी है। जब जब लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि गवर्नमेंट इसलिए करने जा रही है, हुआ वही, ये भी वही होगा। 2-3-4 लोग प्लेयर हैं जो इस फील्ड में भी घुसाएंगे, वो छोड़ ही नहीं सकते। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में भी कचरे का जो नीलामी हुई हजारों करोड़ की थी, उसमें भी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने टेंडर डाल दिया। थैंक यू तो कोई क्षेत्र छोड़ना ही नहीं चाहते जिस पर मोनोपोली उनकी रहो। और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये जो बिल आप पास कर रहे हैं, इसके माध्यम से आज नहीं तो कल इस न्यूक्लियर क्षेत्र में भी 1-2 बाहर के लोगों की तो होगी, हिंदुस्तान के भी 1-2 लोगों की ऐसी मोनोपोली हुई, गवर्नमेंट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। AER भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि इस बिल में संशोधन करने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें आप, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है और इसके साथ में इस बिल का विरोध करें। Thank you, Professor. Now, Honorable Member Jagesh Ramji. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पे बोलने का अवसर दिया। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, परमाणु बिजली को भले ही आधुनिक और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कहा जाए, लेकिन इसके जोखिम और दुष्परिणाम किसी लाभ से कहीं ज़्यादा अधिक गंभीर हैं। परमाणु बिजली बनाने से हर स्तर पर खतरा होता है, माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के रिएक्टर में उसको जलाने तक हर जगह पे खतरा होता है। 1 किलो यूरेनियम निकालने में 1750 किलो रेडिएक्टिव वेस्टेज निकलता है मान्यवर। झारखंड के जादूगढ़ा में सबको मालूम है, वहाँ पे यूरेनियम के माइन है और वहाँ की आसपास की आबादी रेडिएशन का शिकार हो चुकी है, जो भारी गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। यहाँ तक कि मानवर तमाम परमाणु दुर्घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए। हमें मालूम है कि जापान की 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट 1979 यूएस में हुआ, SL1 एक्सीडेंट 1961 में वहाँ पे हुआ। इसके अलावा मानवर इंडिया के अंदर भी हुआ। नरोरा में 1993 में फायर लगी जिसमें टरबाइन हॉल में आग लगी। कलपक्कम में 1987 में रिफ्यूलिंग एक्सीडेंट हुआ। तारापुर में 1989 में लीकेज रेडिएक्टिव पदार्थ का हुआ और यहाँ तक कि मद्रास में 1999 में हैवी वाटर लीक हुआ। मानवर ये घटनाएं देश में तब हुई जब देश में सरकारी तंत्र का पूरा कंट्रोल है। अगर ये प्राइवेट हाथों में पहुंचा और इस तरह की घटनाएं हुई तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी?
साथ ही मानवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमाणु रिएक्टर देश में लगाने की बात चल रही, 8 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है अभी, जो भी परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं 100 को लेके जाने की प्लानिंग चल रही है। अब ये बात साफ है कि भारत 4 सेस्मिक जोनों में बटा हुआ है, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क, ये 4 जोन में बटा हुआ है। हाई रिस्क में इसको लगा नहीं सकते, मॉडरेट रिस्क में लगा सकते हैं या लो रिस्क में लगाएंगे, और जो मॉडरेट एरिया है सेस्मिक जोन का या लो रिस्क एरिया सेस्मिक जोन का है वो पूरी पॉपुलेशन से डेंस एरिया है। अगर वहां पर इसको लगाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हुई या टेरर से लेकर के या कोई पाकिस्तान से वार हुआ या चाइना से फ्यूचर में वार हुआ, कोई भी इस तरह की मिस हैपनिंग हुई तो एक बड़ी तबाही लेकर के आने वाला है मानवर। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, इस तरह के जो स्टेप आप ले रहे हैं तो इसको लेकर के आप रक्षा विशेषज्ञों से, आप जियोग्राफिक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से, आप पर्यावरण के विशेषज्ञों से राय मशवरा लीजिए, और टॉप क्लास के साइंटिस्ट जो है परमाणु एटॉमिक साइंटिस्ट, उनको बैठाइए, उनसे राय मशवरा ले करके इस बिल पर कोई गहन चर्चा करने के बाद इस बिल पर पुनर्विचार लाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का भी काम करिए मानवर। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है मानवर, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इसमें जरा सी भी कोई गलती हुई तो हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ देश को ढकेलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, Mr. Ramji. Now, Honorable Member Jagesh. Thank you for the opportunity, sir. The name Shanti, I don't know why many of them get disturbed. In our Hindu shlokas, if we recite, we start from Om and end from Shanti. For an example, there is a shloka, Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashyate Om Shanti, Shanti, Shanti. That means any person, he wants to come up in his life, he fights, he achieves, he becomes big, and one day he thinks, what is this? I didn't gain anything. One thing I want to gain, that is, I want Shanti. See, the power of word Shanti is fantastic. They have kept the name Shanti for this bill, and I support this bill, sir. Sir, with a deep sense of responsibility towards the nation's future, I stand before this House to express my full support for Shanti Bill 25. This forward-looking legislation reflects the firm vision and bold leadership of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under whose guidance India's energy sector has moved from chronic shortage to confident self-reliance. Sir, it is important to acknowledge the strong foundation laid by Shri Atal Bihari Vajpayee ji through the Pokhran nuclear test 1998. He built forward-looking confidence in the nation and proved the nuclear capability is essential for the national security and not deepening on others. He firmly believed that the nuclear energy should serve both defense and development. Sadly, back-to-back Congress governments failed to carry this vision forward. Sir, I will give you a small example, sir. I came from a very small village. Sir, it's agony, you don't know, when I was a student, I used to pray for the electricity, sir. Let it come. If it goes, it will come next day, sir. But today it is not like that, sir. It is only because the vision of our Narendra Modi ji. See, everywhere there is a development happening, sir. Sir, before 13, under UPA government, India suffered from weak and power cuts was common in those days. Rural families received only 10 to 12 hours of power, sir. And even cities suffered regular power cuts despite repeated promises. The UPA government added less than 7 gigawatts of nuclear capacity, pointing delays and no clear vision in the nuclear plants. Sir, after 2014, under the NDA government led by Prime Minister Modi ji, the situation changed completely.
every village was electrified. Rural India now receives 20 to 22 hours of electricity, and the urban areas enjoy 24/7 non-stop power supply, sir. This change has improved education, healthcare, industry, and digital infrastructure across the country. However, sir, India's electricity demands continues to rise due to manufacturing growth, urbanization, artificial intelligence, and data centers. Renewable energy is necessary, but cannot alone provide round-the-clock base load power. Nuclear energy, therefore, remains necessary. The Shanti Bill 25 updates outdated nuclear laws and allows limited private and joint venture participation, while ensuring that the government retains complete control over the sensitive areas such as fuel, enrichment and reprocessing and waste management. This carefully balanced guarantees safety, security and faster growth. Under Prime Minister Modi ji, nuclear capacity has nearly doubled, new reactors have been approved, and financial support for the atomic energy has increased significantly. The bill also promotes small modular reactors which are safer, faster to build and sustainable for the different regions of India, sir. Unlike during the Congress rule, marked by the delay and doubt, this government displays strategic confidence today nation, including Russia, France, United Nations, United States of America, Japan, work with India because they trust our Narendra Modi ji leadership, policy, clarity and commitment. To conclude, sir, I'll give us two small examples. So when I was small, my granny and my auntie used to prepare food for us, sir. That is, now they call it millet. But for us in Karnataka, it is called ragi mudde, sir. Early morning, they used to get up, 4 o'clock, and for 20 people, they have to work 5 to 6 hours to make that food. So today, one machinery has come, sir, that prepares 100 ragi mudde in 10 minutes, sir. See, that is the development. I say, our all friends, they are still in 1947, sir. They are not going forward. But our leader is trying to make the developed India and is thinking about 2047, sir. But still they are there only. I don't know why always any good things happen in our country, there will be a big opposition, sir. So I pray for them, let God give them Shanti, 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 and let India get a developed country with our leaders' vision, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jagesh. Honorable Member Priyanka Chadurvedi. Sir, thank you so much for giving me a chance to speak on this bill. Jagesh ji was talking about how important Shanti is. But when a bill called Shanti brings Ashanti, then I stand here to oppose that bill, sir. सर हम यहाँ पर जो भी यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं इस बिल का और बता रहे हैं कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब होगा इस बिल के माध्यम से, मैं उन सभी से पूछना चाहूँगी यहाँ पे कितने लोग अपने गृह क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखने की कोशिश करेंगे। 30 किलोमीटर की रेडियस में बता दें। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस टाइम की जो सरकार है, इस समय पे जिस समय में हम रह रहे हैं, कौन सी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो खड़े होकर बेखौफ तरीके से सरकार से कह सके कि जो गलत हो रहा है वो गलतियां हैं, उसका सुधार होना चाहिए। एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस देश में जो इंडिपेंडेंट होगा। सर तीसरी चीज़, ये प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है। मैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी कौन सा ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे उनको अकाउंटेबल रख सकता है। मैं सर आपका ध्यान 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। 3,500 लोगों की मौत हुई थी, 15 से 20,000 लोग वही लीक रिलेटेड डिजीजेज में मारे गए थे। 5 लाख जो वहाँ के लोग थे, रहवासी थे, वो इंजर हुए थे और 2 सदियाँ 3 सदियाँ बीत गई सर,
वो अभी भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हैं और कोई भी उसमें गिल्टी नहीं पाया गया। तो ये देश की सच्चाई है कि जहां रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आने वाली सदियां, अगर हमने ये एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है, इस पे चर्चा नहीं हुई है, आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हम इसका ऑपोजिशन नहीं करेंगे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पुख्ता नहीं करेंगे। सर, चेरनोबिल हुआ था और चेरनोबिल की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोट था। वो कोट था, एवरी लाई वी टेल incurs a debt to the truth. Sooner or later, the debt is paid. सर, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये डेट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम सप्लायर लायबिलिटी को पूरी तरीके से निकालने की बात कर रहे हैं। जो लायबिलिटी है हम कैप कर रहे हैं 3000 करोड़ पे। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फुकुशिमा हुआ था, फुकुशिमा के क्लीनअप में ही $200 बिलियन का खर्चा हुआ है और अभी भी चल रहा है। जो चेरनोबिल हुआ था, $700 बिलियन का खर्चा हुआ और आज भी उसका खर्चा लागू है। और यहाँ पे हम 3000 करोड़ कैप करने जा रहे हैं, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज हटाने जा रहे हैं। दूसरी चीज सर, ऑपरेटर लायबिलिटी भी हमने कैप कर दी है। तो किस तरीके से हम उनको पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं? आप आइए, हमारे देश में आइए, काम करिए, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से काम करिए, पर आपकी हमारे सिटीजन्स की तरफ कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। सर, आरटीआई के माध्यम से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि क्या उसमें कमियां हैं और क्या कमियों को दुरुस्त करना है। आरटीआई को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। ये सर, आई एम वाइंडिंग अप सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, 3-3 मिनट में पूरा नहीं होगा सर। इसमें वाइड स्टेक कंसल्टेशन होना चाहिए, पर खैर हो नहीं रहा है। मैं बस यही कहूँगी, जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, जो बोर्ड है, उसको पूरी तरीके से मजबूत तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हमारे देश में आकर ये लोग प्रॉफिट जरूर करेंगे, पर सिटीजन्स को के हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे, जो वेस्ट एनर्जी से लेकर, हैजार्डस वेस्ट से लेकर, और जो लायबिलिटी जान और माल की होती है, वो हमारे पास छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Tirumati Priyanka Chaturvedi. Now, Honorable Member Harshvardhan Sringala. Chairman sir, Vanakkam. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important sustainable harnessing of atomic energy for transformation, or what is called the Shanti Bill. I want to felicitate the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, for his vision, and our Minister, Shri Jitendra Singh ji, for bringing this bill for our consideration in this House. Mr. Chairman, sir, India stands today at a decisive juncture in its energy journey. The Shanti Bill is a reform that will shape India's civil nuclear sector for generations to come. This bill modernizes the Atomic Energy Act 1962, ends decades of fragmented governance, and establishes India's first liberalized, investment-ready framework for nuclear power, while firmly safeguarding national security and public safety. Sir, I want to also convey to you that in my capacity as Foreign Secretary of the Government of India from 2020 to 2022, I was an ex officio member of the Atomic Energy Commission, which oversaw the nuclear energy, in our entire nuclear energy program. In the Atomic Energy Commission, a lot of the discussions were on the liberalization of our nuclear energy sector. And I'm very happy that today we are seeing the conclusion of that process in the Shanti Bill that is before us. I have to say that Dr. Kakotkar was also a member of the Atomic Energy Commission. He still is a member. जयराम रमेश जी ने कुछ उनके बारे में जिक्र किया, काफ़ी उनके बारे में उनका कोट्स भी दिए। वहाँ वो सदन में नहीं है अभी, पर मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि शायद इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कोट नहीं किया आपने डॉक्टर काकोटकर को। सर, जिन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी, हमारे परमाणु ऊर्जा का मुद्दा ध्यान से फॉलो किया होगा, वो आपको बताएंगे कि हम इस बिल, जो शांति बिल है, इसके इंतज़ार में
15 साल ठहरे हैं, मतलब इसका 15 साल इंतज़ार हुआ है। और इस बिल का यही है कि 2010 में यूपीए ने, कांग्रेस ने सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट अपनाया था। इनका यही इरादा था कि ये एक्ट और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो 123 एग्रीमेंट कहते हैं, 2005 में साइन हुआ था, इसके माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आए, खास तौर से यूएस से। पर ये एक्ट में इतनी कमियां थी कि इसमें से एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट भी नहीं आया और हमारे देश को एक पैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आना था वो भी नहीं आया। कांग्रेस के समय में इनका लक्ष्य था कि 2032 तक 63 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी हम क्रिएट करेंगे, पर इन्होंने 7 गीगावाट तक भी क्रिएट नहीं किया। और अभी हम सुन रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में ये विरोध कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी ये विरोध कर रहे हैं। शायद इनको याद नहीं होगा कि 2008 में इसी गठबंधन में विवाद हुआ था और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के खिलाफ लाया गया था, जिसमें ये हारते हारते जीत गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की धमकी देना पड़ा, तब जाके कुछ उसमें समाधान हुआ। तो इसमें जो पार्टीज, जो दल उसी वक्त मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के चर्चा कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के प्रस्ताव दे रहे थे, अभी आज इसी के खिलाफ आए हैं। सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, India has made historic progress in clean energy. As of late 2025, he should yield. He is not yielding. He is not yielding. Sir, in 20... Please, sir. Rajiv ji, please, sir. I am only giving, sir, what are facts of the matter. No, he is not yielding. And this is a response to what Mr. Jairam Ramesh has said. Are you ये मैं yielding? कहना चाहता हूँ, You are not yielding. You are not yielding. You are not yielding to me. Please, sir. सर मैं Please, कंप्लीट please, कर sir. लूँ जो मुझे कहना है। Please, sir. Please, sir. 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्लासगो में COP26 के समिट में थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 2030 तक हमारे जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। और मुझे खुशी हो रही है कि आज 5 साल पहले हमने ये पूरी कर दी है और आज भारत का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 50% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब 500 गीगावाट्स में से 250 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व पहले भी हमारे सुधामूर्ति जी ने एक्सप्लेन किया है। बेस लोड फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसमें से हमारा एनर्जी का ट्रांसमिशन स्मूथ हो सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश में और रिन्यूएबल एनर्जी में। और न्यूक्लियर प्लांट्स डिलीवर राउंड द क्लॉक कार्बन फ्री पावर, generating among the highest output per megawatt of any clean source. As India prepares to retire aging coal plants and as electricity demand more than doubles by 2040, nuclear energy, sir, becomes a core pillar of sustainability, grid stability, and energy security. Sir, I want to just briefly outline the advantages of the Shanti Bill, because there has been a lot of statements that have not fully understood what this offers. The Shanti Bill enables controlled private, foreign, and joint venture participation in nuclear power generation, while ensuring that strategic functions such as uranium enrichment, fuel reprocessing, and spent fuel management remain exclusively with the Government of India.
Let me state clearly, this is not privatization, this is partnership with accountability. Now, there are many who have talked about the fact that we should oppose foreign direct investment, we should oppose privatization. On that, I want to say that the vision of Prime Minister Modi is to take our nuclear power sector to 100 gigawatts by 2047. Today, we are at close to 9 gigawatts. And that will bring India, make India not only a player, a global player, but one of the leading global players in the world. Now, for that, we need an investment over 19 lakh crore. And that is clearly not possible from the realm of the public sector. We have to open this up to the private sector. And those who are opposing privatization today were also opposing privatization when this was introduced in the electricity sector, when private participation was suggested. But today, India is the world's third largest power producer in the world. Similarly, when there was an opposition to telecommunications sector being liberalized and the private sector coming in, today we can see that this has become, internet telephony is one of the cheapest in the world and is the largest in scale anywhere in the world in India, again due to private sector participation. In the defense sector, where there was a lot of skepticism about the involvement of private players, during the UPA government, 70% of our equipment, defense equipment, had to be imported. Today, I'm very happy to say that under the Modi Sarkar, 65% of our defense equipment is manufactured in Atmanirbhar Bharat. So that, I think, is something that we need to keep in mind. Honorable Sir, I want to say that our technological foundations are solid and indigenous. India's pressurized heavy water reactors, fast breeder reactor program, and the 700 megawatt reactor fleet now have over 90% domestic content. From heavy forgings to safety systems, the nuclear supply chain exists entirely within India. The Shanti Bill will accelerate Atmanirbhar Bharat, not dilute it, creating high-skilled jobs, boosting advanced manufacturing, and energizing our innovation ecosystem. Now, a number of comments was made on the involvement of private players. Now, it is very clear that it is not a few private players. There is a very large number of people, large number of companies from the private sector who have expressed interest in investing in this nuclear energy sector. And I think that is what will unleash the full potentials of India's industry in this very, very important sector. Not only that, there has been also comments that in many countries, foreign investment, or rather foreign countries have decided not to go in for nuclear energy anymore. Let me say that during the COP26 meeting, over 22 countries pledged to triple nuclear capacity by 2050, 22 countries in the world. And let me also give you a breakup of the countries and what they have in terms of privatization in their own countries. In nuclear projects around the world, UK, for example, its new reactor will be financed 45% by the UK government and 55% by private investors. Canada is a similar thing. United States, virtually all nuclear plants are owned by private utilities. There was a mention by Honorable Jairam Ramesh ji that France has a policy where all nuclear plants are controlled and owned by the government. Let me say that France energy giant, sir, EDF, combines public backing with capital markets. In other words, they ensure there is a private sector inflow in whatever projects they are undertaking. Even in emerging nations such as China, state nuclear corporations partner with private suppliers and financiers. So there is a long list of countries that have used joint ventures with private capitals to further their nuclear energy industries. And I think India is no different from that point of view. Sir,
there was a reference to the fact that in 1948, 1962, there was an Atomic Energy Act that was introduced, that we were one of the first countries to go in for atomic energy. My question is that when, under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, a line was drawn in 1967 that divided the world between haves and have-nots, those states that had nuclear capabilities and those states did not, in the light of the history of Chinese invasion, in the light of the history of China itself testing its nuclear weapons in the 1960s, my question is, why did we not go for a nuclear option at that time? Why did we, in view of our national security interests, opt out of that, I would say, possibility? It took, sir, it took the leadership of Atal Bihari Vajpayee ji in 1998 to test the Pokhran nuclear, to undergo the Pokhran nuclear tests and bring India firmly into the list of de facto nuclear powers. And what I want to also say is that, sir, that was conducted as a peaceful nuclear test for civil nuclear energy purposes. I think that was very, very clearly specified. That was different in 1998 when it was very clear that we were testing it for purposes other than civil nuclear. And here, it would be recalled that Honorable Mr. Chidambaram, member of this House, who was then Finance Minister, while speaking in Parliament, undermined India's assertion as a nuclear power, reflecting a deeper heritage, a deeper hesitation within the Congress leadership about embracing nuclear capability with confidence. And today, I think we have a situation where we can say that the 2008, not only in 2008 did we have the opportunity to break that, I would say, hold of diplomacy and isolation. That definitely was there, and I mentioned that earlier also. But subsequently, today, we have the opportunity to take that initiative forward in the Shanti Bill and bring it to fruition. So I just conclude by saying that, by quoting our Honorable Prime Minister when he has rightly said, वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो हमें हर सेक्टर में नया विचार और नए सहयोग के दरवाजे खोलने होंगे. Opening the nuclear sector is a calibrated, regulated, and responsible manner, in a calibrated manner, is precisely such a step to make India not only one of the world's players, but one of the world's greatest players in the nuclear energy sector. Sir, the Shanti Bill, I'm just concluding, sir, is not merely about power plants, it is about powering India's growth, protecting India's industry, creating skilled employment, and securing energy for generations to come. I commend the Honorable Prime Minister and the government for their foresight and courage, and I urge this House to support this landmark reform in the supreme national interest. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you to Harshavardhan Avarkale. Now, Honorable Member Dr. Fauziaka. Dr. Fauziaka. Honorable Vice Chairman, I rise to speak on the Shanti Bill 2025. Sir Albert Einstein said that peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. This is what he spoke about peace, which is the meaning of Shanti, sir. So this bill is being presented as a historic reform to unlock nuclear energy for Vikasit Bharat. The benefits of nuclear energy cannot be denied, sir. But if we look beyond the slogans, we are socializing risk, privatizing profit, and postponing the hardest questions on safety, waste management, and accountability. That is why it engages the constitutional duty of the state under Article 21 of Protection of Life and Liberty. At its core, sir,
this bill raises serious issues that Parliament cannot ignore. Number one, the issue of national security. So this bill risks national security by allowing private nuclear ownership with weak safeguards, with enabling hidden foreign control through shell companies, funds, software, or AI over critical nuclear infrastructure. Number two, sir, liability and foreign suppliers. The bill shifts to a purely operator-centric liability model, with only a very limited right of recourse. In doing so, sir, it moves away from the principle of absolute liability laid down by the Supreme Court for hazardous industries. Foreign reactor vendors and equipment manufacturers are effectively shielded here. Indian operators are exposed. And when something goes wrong, it is the Indian taxpayer who will ultimately pay. This is strategic vulnerability, sir. Sir, number three, the liability caps. The second schedule fixes the liability at 3,000 crores, which is about $410 million for the larger reactors and much less for the smaller units. Sir, in the Bhopal gas tragedy, the settlement had reached in 1989 was about $470 million. Today, this bill proposes a lower dollar value cap for nuclear accidents, even though nuclear damage may be far longer and far widespread than anything. Accidents are not measured in megawatts. They are measured in lives, in land and time. Sir, number four, this is about intergenerational justice, sir. The bill allows us to expand capacity today, but leaves future generations with two unresolved burdens in the form of high-level radioactive waste for which there is still no roadmap, no clear roadmap for final disposal. Sir, half a minute. My last point, number five, the bill is very detailed on central institutions, board, claim commissions, appellant tribunal, but silent on any formal role for state governments, for local bodies, district disaster authorities in sitting decisions. 2 seconds, sir. Or off-site emergency plans. All core powers are centralized with the central government. So that's why, sir, I recommend that this bill go to a JPC or a standing committee. Otherwise, jang mein qatl sipahi honge, surkh ru zille ilahi honge. Thank you, sir. Thank you, Dr. Fausiaka. Next is Honorable Member Dr. Palmer Salam Singh. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Today we debate the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. And I tell this august House that this is not just an energy bill. This is a survival bill. It is a prescription for the health of our economy and the health of our people. And that's why I rise to support this bill. First of all, before moving forward, I congratulate our Prime Minister, sir, and our Minister, sir, Jitendra Singh ji, for this wonderful bill, because without visionary leadership of our Prime Minister, sir, this was not possible. We have to compare some data, sir. All have discussed only on electricity production. So what was in 2014 and what is now? In 2014, the total capacity of electricity production was 248.5 gigawatt. Today, we moved up to 505 gigawatt by this December 2025. In that, the solar electricity generation was 2.6 gigawatt only in 2014. Today is 127 gigawatt. Again, in 2014, the wind power was 21 gigawatt. In 2014, it is 53 gigawatt. Overall, per capita consumption
in 2014 was 957 kilowatt, that moved, that progressed up to 1395 kilowatt per capita consumption. That will be the further parameter in future of the developed country. Another parameter, that is the shortage. It was 4.2% in 2014. Today is hardly 0.1%. That's the greatest improvement ever. And this has happened because of the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. Honorable Chairman, sir, in medicine we often speak of homeostasis, the perfect balance required in our body for the functioning of all organs. A nation too needs a balance. We need the raw kinetic energy of growth, balanced by immune system of safety and accountability. India is currently a nation with rapidly accelerating metabolism. We are digitalizing faster than any nation on the earth. The preamble of this bill rightly notes that the explosion of artificial intelligence, high-performance computing, and data centers requires massive, stable, and round-the-clock power. Wind and solar are our essential instruments, but they are intermittent. Nuclear energy is the muscle builder, the base load that runs 24/7. We have a target of 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047. To achieve this form of our current capacity is mammoth task. The state alone cannot fund this treatment. We need private capital too. This bill under clause 3 wisely permits any company to participate in the sector, moving us away from the state-only monopoly. Sir, clause 3 of this bill does exactly that it invites the private sector to build the body while the government jealously guards the soul, the fuel cycle. Sir, but does this mean we are reckless? No. The bill creates a robust safety authorization regime. It elevates the Atomic Energy Regulatory Board to a statutory body. As a doctor, I would never prescribe a powerful drug without monitoring a patient. Similarly, this bill prescribes powerful energy, but with the strictest regulatory monitoring mechanism our laws have ever seen. Sir, I listened carefully to my friends in the opposition. I heard the words like monopoly, the capped liability. Honorable members, let us look at the pathology of these arguments. The opposition argues that capping liability under clause 13 and the second schedule puts people at risk. I say to you, unlimited liability is a myth. It is a legal fiction that ensures no liability is ever paid because no project ever gets built. By clearly defining the operator's liability and mandating insurance under clause 15, we are ensuring that if, God forbid, an incident occurs, there is actually bankable money on the table for compensation. We are making the system solvent. We are replacing theoretical protection with the practical financial security. On monopoly, your fear, private monopoly. This bill breaks the biggest monopoly of all, the state monopoly. It invites competition, it invites innovation. Look at the South Korea, look at the France. Their citizens enjoy cheaper power and cleaner air because they embrace this model. Energy poverty is the worst disease the nation can suffer. It kills industries, kills jobs, and it kills hope. This bill is the cure. Sir, Honorable Chairman, sir, let me take off my politician's hat and put on my white coat. Many of this house hear nuclear and think only bombs and boilers. You are missing the miracle. Today morning also we have discussed such thing. A nuclear reactor is not just a power plant, it is a factory of isotopes. The fission process creates many byproducts that is called radioisotopes. That are the most sophisticated tools in the modern medicine.
The preamble of this bill explicitly states the purpose includes application in healthcare, food, water, and agriculture too. In agriculture, we lost 40% of our produce to rot. Using gamma radiation, we can sterilize food, extending the shelf life of onions, potatoes, and grains without using carcinogenic pesticides. This is preventive medicine of our nation's food security. In water, the waste heat from these reactors can drive massive desalination plants, turning seawater into potable water too. But the most emotional argument for this bill is the oncology wards of our hospitals. Cancer, Honorable Chairman, sir, is an epidemic. As a doctor, I have looked into the eyes of the patient who needs scans or therapies that are simply too expensive or unavailable because the isotopes have to be imported from outside. Diagnostic power, we can discuss technetium-99M. This is the workhorse of our medical imaging. It detects cancer spread in bones, it checks heart function, it has short half-life. We cannot import it easily. We must make it over here. By allowing private research reactors under Clause 9 and Clause 3, we can have domestic production lines for molybdenum-99, the parent of this isotope. We have therapeutic power, and we are moving towards theranostics, or we can say theragnostics, therapy plus diagnostics. Iodine-131, lutetium-177, yttrium-90, these are the examples of these isotopes. These are not just chemicals, they are radioactive keys that log onto the cancer cells and destroy them from inside, sparing healthy tissues. This is the targeted alpha therapy. That will be the game changer in the future. Currently, our capacity to produce this is limited by the number of reactors we have. This bill opens the door for research reactors and radiation facilities to be set up by private players and research bodies. Imagine a future where specialized medical reactor is funded by a consortium of Indian hospitals dedicated solely to producing life-saving isotopes. This bill makes the legal. It brings the cost of cancer scan down from thousands of rupees to hundreds. It makes survival affordable. Furthermore, for rare diseases, radiopharmaceuticals are often the only hope for the palliation or cure. By liberalizing the research sector under Clause 9, we encourage our scientists to patent invention in this field, a right explicitly protected under Clause 38. We are unleashing the genius of Indian scientists to solve the pain of Indian patients. In the end, I conclude, Honorable Chairman, sir, to oppose this bill is to oppose the light that power a child's study lamp. To oppose this bill is to oppose the isotope that save a mother from cancer. Thank you, Doctor. To oppose this bill is to choose stagnation over science. This bill is the balance, the leisure to economics with the sanctity of human life. It provides the power to grow and power to heal. As a doctor, my prescription is clear. The House must pass this bill. India is ready for its next great leap of vitality. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pama. Now, Honorable Member Kartikeya Sharma. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I rise to support the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, the Shanti Bill 2025. The bill is about one clear issue. Why has India not been able to scale nuclear power despite having the knowledge and resources? And how do we fix that? Sir, India is the third largest energy consumer in the world, but nuclear energy contributes only about 1.7% of our total energy mix today. Let us compare this with other countries. France produces nearly 70% of its electricity from nuclear power. The United States produces about 19% of its electricity from nuclear power. China is also rapidly expanding nuclear capacity to support its factories and cities. These countries use nuclear power to power industry, jobs, and economic growth. India, despite its growing energy demands,
remains stuck at a very low nuclear energy adoption. Sir, this was not because India's scientists failed. It was not because our engineers lacked skill. It was not because our technology was unavailable. It was not because the nation lacked vision. It was because policy failed. It was because decision-making was delayed. It was because risk-taking was avoided. And it was because reform was postponed for far too long, since there was no political will to implement it. Sir, India's nuclear journey began with the foresight and confidence. Dr. Homi Bhabha imagined an India that would never be energy dependent. Three-stage program was made rooted in thorium was his answer to permanent energy security. But for many years, under successive governments, this program moved very slowly. Fast breeder reactors were delayed, thorium enrichment was not pushed seriously, and major projects took more than a decade to complete. As a matter of fact, the prototype fast breeder reactor approved in 2004 took almost 2 decades to reach the core landing. Projects like Kakrapar 3 and 4, which would have taken 5 to 6 years, stretched to nearly 10 years, sir. The Shanti Bill directly addresses this by ending over-centralization, opening the sector to regulated private partnership, and bringing capital, timelines, and accountability into nuclear project execution, as it is done in the rest of the world, sir. Sir, the present government has set a target of 100 gigawatt of nuclear power by 2047. This is necessary for Viksit Bharat, energy security and clean growth. But reaching 100 gigawatts needs huge investment. Nearly 20 lakh crores will be required over the next 2 decades. The government alone cannot fund this. This is why opening the nuclear sector to the regulated private participation is essential. The Shanti Bill does exactly this, sir. The government remains in control of safety and regulation. National security is protected, but the private companies are allowed to invest, build, and innovate. As a result, this will speed up projects, it will reduce delays, and it will help India add capacity faster. This bill also prepares India for future needs, sir. Sir, small modular reactors can supply steady electricity to data centers, smart cities, and industrial zones, delivering captive power to them, sir. Sir, not only this, SMRs have been known to be put on boats and other devices where 50 megawatts, 100 megawatts can be portably used in far-flung areas where energy cannot be produced. And this can actually become the battery for digital life and digital India in future. Moreover, a strengthened nuclear ecosystem will deliver benefits far beyond electricity. Nuclear facilities produce medical isotopes that can be used in cancer diagnosis and treatment, atomic medicine, agriculture research, and food irrigation. And most importantly, the advent of AI has pushed us for the need of more power, sir. The Shanti Bill also unlocks private funding for nuclear research and development. By opening the nuclear sector to private participation, the bill brings long-term investment into research, strengthens training capacity, and fully taps India's nuclear talent. Today, only 36% of India's R&D expenditure comes from the private sector. In comparison, private R&D accounts for 68% in the United States and nearly 75% in China. The Shanti Bill directly addresses the gap by creating, enabling an ecosystem for private R&D participation in nuclear energy, sir. Sir, the opposition has repeatedly claimed that this bill dilutes safety without engaging with what the bill actually provides. So safety in nuclear power cannot be understood by placing fear before the facts. As Marie Curie once said, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. So sir, सड़क पे चलने एक्सीडेंट के डर से सड़क पे चलना हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा, डरिए मत, डर के आगे जीत है. The bill is about replacing fear with understanding. Clause 17 of the bill reinforces the authority of the Independent Nuclear Regulator, AERB, and ensures that no reactor, public or private, can operate without continuously regulatory oversight. This bill accelerates capacity, not risk. Honorable Chairman, sir, for many years, India moved slowly in nuclear energy. Today, the government has chosen reform over hesitation. This bill removes old barriers. It matches ambition with action. And it puts India on the path of energy independence. In ancient India, Maharishi Kannad spoke of Anu, or atom. In modern India, Dr. Homi Bhabha gave us a nuclear roadmap. Today, this government is creating the system of final
finally deliver on what vision, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we stand at the threshold of another historical leap. A nuclear renaissance is now within the reach, because this will form the bedrock of a Viksit Bharat. And to reach and become a Viksit country by 2047, it is imperative that we embark on this journey. Sir, I therefore strongly support the Shanti Bill and really thank you for giving me the time and opportunity to speak. Thank you, Mr. Vande Mataram. Sharma. Now, Honorable Member Dr. K. Lakshman. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me this opportunity to speak on this historical bill introduced in the House. I rise today and extend my strong and unequivocal support to this Shanti Bill. This proposed legislation is not merely a technical reform or a sectoral adjustment. It is a forward-looking national statement reflecting India's confidence, maturity, and readiness to lead in clean, reliable, and responsible energy for the 21st century. Under the leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, who is the man who takes a bold decisions to see that India marches ahead. And he also demonstrated bold reforms, and he strongly believes in three principles: reform, perform, and transform. And the philosophy is reform with foresight, growth with safeguards, and development with dignity. Sir, the Atomic Energy Bill in 1962, the act which was passed in a very different India, an India that was still consolidating its scientific institutions and technological foundations. At that time, it was appropriate that nuclear energy remained strictly within the domain of central government. No, that's wrong. Now, this bill not only proposes to have a semi-government and private partnership, because, as rightly said by our earlier colleagues, this government has an ambitious and commitment to go for a clean and renewable energy. And this government has taken a bold decision to see that to achieve energy independence, to decarbonize its economy, and to attain net zero carbonization by 2020, where it needs lakhs of crores of rupees, which may not be possible by any government. So, private partnership is a step towards achieving that goal. India has already taken decisive steps in this direction. Over the last decade, there has been 60% increase in nuclear power generation and 71% increase in installed nuclear capacity. 10 nuclear reactors are being pursued, and the country has set a bold target of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. That is, by the time the independence achieves 100 years, so the dream of making India as a Vikasit Bharat, the dream of our beloved Prime Minister to make Vikasit Bharat, so we also have to attain and achieve such goals. But unfortunately, Congress during its regime, UPA, celebrated the Indo-US civil nuclear agreement, but lacked the courage, clarity, and the competence to operationalize. Congress wanted the optics of reforms, but not the responsibility of governance. Congress' opposition to nuclear energy has always been rooted in fear-mongering rather than facts. It was always during 10 years rule, it was policy paralysis, and it was under pressure from its coalition partners to take any decisions, and somehow we lost a precious decade where India lost. Yeah. Honorable Sir, the particular instances where states like Telangana, which is upcoming in data centers and technology, cloud computing, fintech and artificial intelligence, and digital services. Hyderabad today attracts large-scale investments and that demand uninterrupted high-quality power supply. The consumption has increased in many-fold, right from now shortage to surplus,
the electoral sector now, which has come up in Modi's regime. In this Shanti bill, it's not just an energy reform. It is a digital economy enabler. And particularly to achieve this target, government has come out with a major nuclear energy mission in the current union budget. Under this mission, India aims to develop at least 5 indigenously designed SMRs by 2033 and to achieve 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047. So, India's largest nuclear project, recently our beloved Prime Minister Narendra Modi ji has launched a nuclear power plant at Mahi Banswara in Rajasthan, wherein 4 into 700 megawatt projects of Anushakti Vidyut Nigam Limited with a cost of 42,000 crores is a part of India's fleet mode of program. Sir, I fail to understand why our opposition and critics, when this Shanti bill has come up, why they are so ashanti. I fail to understand. But this not only being a clean and energy sector, but also helps in social good and public welfare. Nuclear power plants currently produce 56,000 million units of clean electricity, accounting for 3% of the country's total generation. This has prevented nearly 49 million tons of carbon dioxide emissions. Importantly, nuclear power remains cost-effective with an average tariff of approximately rupees 3.83 per unit. So, beyond the power, Department of Atomic Energy has developed technologies and directly benefit citizens spanning healthcare, agriculture, food sector, water purification, waste management, and hydrogen, this thing also. But as I said, under Congress rule, nuclear energy was treated as a political burden, a protest management problem, a subject best avoided during elections. Congress leaders who now lecture in the House on safety conveniently forget that nuclear plants prevent 49 million tons of carbon dioxide emission annually. Nuclear energy provides round-the-clock clean power, unlike intermittent renewables. Without nuclear energy, India has to more depend on coal and imports. So when we talk of this climate change and when we talk of renewable energy, nuclear power, we have seen some countries like France, 90% of the electricity is produced by nuclear, this thing only. But still, India has to go ahead. This bill, definitely, I assure and feel confident that it comes up with the dreams. We have seen during Vajpayee's law how our nuclear power has been demonstrated, that Pokhran, in spite of sanctions by America, but our leadership, right from Vajpayee ji and Modi ji, because we have a strong will for the nation. But with this, Shanti bill draws a clear political line. It is science versus superstition, confidence versus fear, and nation building versus narrative politics. Congress as an opposition is not safety or public interest. It is about defending a failed leadership and legacy. The Prime Minister has chosen to move forward, making nation a forward. Sir, Modi ji always thinks of next generation, not next general elections. Congress always thinks of next election only. Dr. Lakshman. Modi plans, Dr. Lakshman, policies, please speak Congress on the bill. promises. Now, please speak on the bill. Sir, yes, sir. This is regarding bill only, and what type of governance we have seen. मोदी की नजर अगली पीढ़ी पर है, कांग्रेस की नजर अगली सीट पर है. Modi's roadmap runs for decades. Congress road shows runs till polling day. And Modi's future is perfect for Congress. It's a project report before elections. मोदी के लिए भविष्य एक परियोजना है, कांग्रेस के लिए चुनाव पूर्व रिपोर्ट है. Modi's plans for tomorrow's India, Congress plans for tomorrow's polls. This is a change we can see between the leadership. So the entire country now believes in the leadership of Modi ji, where Modi, the dream of making Vikasit Bharat, developed India by 2047. I am sure and confident this bill definitely makes India a progressive India in all fields. I strongly support in this bill, sir. Thank you and thank you very much. Thank you, Dr. Lakshman.
Now, Honorable Member Mahua Maji. वाइस चेयरमैन सर, केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जिस शांति बिल को लाना चाहती है, एक्चुअली वो अशांति बिल है और ये मानवता के लिए खतरा है। सर, ये भले सच हो कि आप चाहते हैं कि देश में जो डीकार्बोनाइजेशन के लिए अच्छा है, बट सर ये अच्छा इसलिए नहीं है कि मैंने इस विषय पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। मैंने 4 साल की मेहनत के बाद झारखंड के जो जादूगोड़ा में जहाँ यूरेनियम रेडिएशन से लोग प्रभावित होते हैं, उन पर यह किताब मैंने लिखी है, जो जेएनयू से लेकर साउथ तक में कम से कम 20-25 यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में उस पर एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं। मैं उस आधार पर, उस रिसर्च के आधार पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बिल को पास करने के पहले इस किताब को जरूर पढ़ लें। इसमें उन आदिवासियों की पीड़ा है जो जहाँ यूरेनियम की माइनिंग होती है सर, और ये जादूगोड़ा हमारे झारखंड में है जहाँ विकलांगता, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और तरह तरह के बांझपन की बीमारी। सर अभी भी वहाँ किसी दूसरे गांव के लोग अपने बच्चों को शादी नहीं कराना चाहते और नहीं यहाँ की लड़कियों को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो तमाम बीमारियाँ उनको हो सकती है। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ सर कि इसके लिए जो एक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है तो उससे जो ईंधन बनता है वो यूरेनियम से होता है, और यूरेनियम के ईंधन से जो उसका निकला था डस्ट, और उसी से प्लूटोनियम उससे जो निकला था, उससे एक बार हमारे देश में पोखरण 1 का हम लोगों ने उसका प्रदर्शन कर चुका है। इंदिरा गांधी ने 1974 में जो पोखरण में विस्फोट किया था न्यूक्लियर पावर को दिखाने के लिए, उसमें इसी बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था जो कि यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है सर। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर किसी गलत प्राइवेट अगर ऑपरेटर के हाथों में, अगर सिरफिरे ऑपरेटर के हाथों में ये पड़ जाए, ये ईंधन का जो भी निकलता है वो डस्ट, तो सर वो पूरी तबाही आ सकती है। इसमें इतना पावर होता है न्यूक्लियर एनर्जी पर, बम में आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था कि अभी भी हिबाकुशा कहते हैं उसके पीड़ितों को जो विकलांग पैदा हो रहे हैं सर। और चेरनोबिल में जो डिजास्टर हुआ था, छत उड़ गया था कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद, उससे क्या त्रासदी हुई थी ये भी सबको पता है सर। अभी तक मशरूम वहाँ के लोग नहीं खा सकते हैं इतने सालों के बाद। सर एक किताब आई है चेरनोबिल, जो जिसे नोबेल प्राइज मिला है, उसके राइटर ने अपनी पीड़ा को बताई है कि कैसे मशरूम खाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। 300 तरह के मशरूम बैन हो चुके हैं अभी तक। वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है सर अगर ये किसी प्राइवेट के हाथों में पड़े तो। और सर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जादूगोड़ा में जो टेलिंग पॉन्ड है, जैसे जो यूरेनियम जो ज़मीन से निकलता है तो क्रशर में उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है उसे पॉन्ड में जमा किया जाता है। उस पॉन्ड में चलकर कितने बीमार होते हैं, चूँकि उससे अल्फा बीटा गामा उसका निकलता है और जो कि कंक्रीट के दीवारों को भी भेद करके जा सकता है सर। उसमें किसी भी तरह का बाउंड्री काम नहीं करता, और एक बार जब यूरेनियम को ज़मीन से निकाला जाता है तो लाखों साल तक गन शॉट्स होते रहते हैं, उसका नुकसान पूरी पृथ्वी को होता रहता है सर। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, इसलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा तो यूरेनियम ज़्यादा निकाला जाएगा और उसका खमियाजा पूरे देश को करना होगा सर। ये किताब है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है सर। ये आदिवासियों के बारे में आदिवासियों की तरफ से लिखा हुआ। हमारे यहाँ के आदिवासी कहते हैं कि यूरेनियम को धरती के भीतर ही पड़े रहने दो, उसे मत छेड़ो, वरना सांप की तरह यह हम सबको डस लेगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम जरूरी है सर। जापान में जब सुनामी आया था तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी आ गया था, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था सर। वो रेडिएशन कैलिफोर्निया तक चला गया था पैसिफिक ओशन को पार करके, और अमेरिका ने सबसे बड़ा जनरेटर भेजा था जापान में उसे कूल करने के लिए। और सर उसमें 50 साइंटिस्ट उसके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने गए थे उसे शांत करने के लिए सर। सर आप जानते हैं सर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है इसमें, इसके खतरे सर 10 बार आप इसको सोचिए इस बिल को पास करने के पहले, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। क्या वो माफ़ करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी? क्योंकि एक अगर न्यूक्लियर बम पड़ा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लाखों सालों के लिए। इतना बड़ा लेयर पूरा आ जाएगा आसमान में कि सूरज की रोशनी तक हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी सर। पूरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा सर। और ये हम लोग देखे हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस तरह से प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल बेपरवाही से काम करती है सर। इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विदेशों की तुलना करते हैं लेकिन विदेशों में मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, वहाँ पर लोग करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट, अगर आप आए दिन पाकिस्तान और दूसरे देशों से लड़ाई करते हैं सर, अगर किसी के पास ये बम आ गया उस बाई प्रोडक्ट से तो सर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी सर। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं इस किताब को पढ़ लीजिए, इसमें तमाम बातें रिसर्च के साथ लिखी हुई है सर। तो इसलिए इस बिल को करने के पहले बार सोचे, 10 बार 1000 बार सोचे सर, लेकिन इसको पारित ना करें। ये शांति नहीं अशांति बिल है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिरुमति महुआ माजी।
Honorable member Kanshiyam Tiwari ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज शांति बिल 2025 के लिए बोलने खड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान जयराम जी रमेश को, उन्होंने इसमें भाषण की शुरुआत करी और पूरा इतिहास बताया और इतिहास के साथ साथ उन्होंने एक बहुत जोर की बात कही कि ये बिल जो लाते हैं, इन बिलों के नाम ऐसे रखते हैं कि नाम के कारण से लोगों को परेशानी होती है। जैसे इस बिल का नाम शांति बिल रखा, पहले नारी शक्ति बंधन बिल आया तो उसका नाम लिखा, अब शिक्षा अधिष्ठान का नाम रखा, तो ये नाम रखा। और अब आगे जो बिल आ रहा है विकसित भारत जी राम जी आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये माननीय उपसभापति महोदय, जब ये नाम रखते हैं तो नाम के कोई फैशन नहीं है नाम रखने का। नाम इसलिए रखते हैं कि नाम के पीछे हमारी भावना रहती है। जैसे इस बिल का नाम शांति रखा, तो शांति का मतलब सबसे पहले भारत ने जब ये परमाणु रिएक्टर शुरू किए तो होमी जहांगीर बाबा ने कहा था कि हम इसको शांति के काम में लेंगे, परमाणु ऊर्जा। तो शांति का इतिहास, फिर हमारा इतिहास शांति का है। हम कहते हैं ओम द्यो शांतिर अंतरिक्ष शांतिर आपय शांतिर ओषधय शांतिर वनस्पतिर शांतिर शांतिरेव शांतिर सामा शांतिर। ये जो शांति है ये हमारे संस्कृति से आती है, इसलिए इसका नाम शांति रखा। अब जब हमने नारी शक्ति बंधन रखा, उसका भी इसका नारी शक्ति बंधन इसलिए रखा कि भारत की जो नारियां हुई है, गार्गी से लेकर मैत्री से लेकर अहिल्या से लेकर द्रौपदी से लेकर सीता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ये सब नारियां जो हुई है, इन नारियों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम बिल नाम रखते हैं। तो ये सारे नाम रखते हैं। जैसे कर्तव्य पथ नाम रखा, तो इसलिए कि प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर चलते हैं और आप सब लोगों को भी कर्तव्य पथ पर चलने के लिए कहते हैं, इसलिए ये काम नाम रखा। हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो ये नाम इसलिए रखे जाते हैं। अब इन नाम से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये जो बिल है, ये बिल जो आया है, ये बिल भारत की भावी आवश्यकताओं के लिए है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो है ना, वो त्रिकालदर्शी हैं, 3 काल देखते हैं। आपने तो देखा था भूतकाल कि 1948 से लेकर आप तक आपने क्या किया, और हम देख रहे हैं वर्तमान, और ये बिल है वो देख रहा है भविष्य काल। इसलिए ये त्रिकालदर्शी बिल है। इसका ये नाम ये भी हो सकता है त्रिकालदर्शी बिल। अब मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम जो ये कहना कि केवल ये विद्युत उत्पादन के लिए है, उसके लिए है, वास्तव में आज की भारत की आवश्यकता है। भारत को जब 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है। ऊर्जा संरक्षण हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऊर्जा उत्पादन भी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सारी बातों की चर्चा हुई है सभापति महोदय। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत हमको पैदा करना है। अभी 240 तक माननीय प्रधानमंत्री 270 तक भारत को लेकर गए हैं। 2070 तक नेट जीरो करना है। ये सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है और 100 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर से हमको प्राप्त करनी है, ये 2047 तक। इसका जब ये लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज हमारी जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें 55 से लेकर 73% तक तापीय बिजली कोयले से होता है। अरे कोयला हमारे यहाँ पैदा होता ही है, लेकिन आयात भी करना पड़ता है। इससे कार्बन की काफी निकलता है। ये सारा काम होता है और वो महंगा भी होता है और इसकी ढुलाई भी महंगी पड़ती है। फिर दूसरी जो ऊर्जा है वो मैंने देखी है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो सोलर एनर्जी का है। सोलर एनर्जी राजस्थान में बहुत हुआ है, बहुत पार्क लगे सोलर के, लेकिन सोलर एनर्जी में जितनी जमीन जाती है नीचे, वो जमीन बहुत जाती है। और दूसरा उसका एक कारण हो रहता है कि वो बरसात के समय में
और रात के समय में वो पैदा नहीं होती, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं रहती है। उसी प्रकार से विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी में भी जब काम करते हैं तो विंड एनर्जी भी हमारी हवा चले हवा नहीं चले ये काम करती रहती है। तो इसलिए इन सारी जो है इनमें सातत्यता नहीं है, लेकिन इसका जो लोड बेस है परमाणु ऊर्जा का वो 24/7 है, लगातार है और 60 वर्ष तक लगातार दे सकती है। इसलिए इस प्रकार की ऊर्जा हमको आवश्यक है, इसलिए इसको विदेश के लिए खोलना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा उनके ऐतिहासिक निर्णयों के लिए। उन्होंने स्पेस को खोला और अब परमाणु को भी खोल रहे हैं, इस ऊर्जा को भी खोल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो हम एक लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत के आज तक कोई भी योजना अभी सारी बात की साहब, मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने कहा साहब 48 में ये हुआ, 62 में ये बिल आया, 66 में ये हुआ, सारे वैज्ञानिकों का भी नाम लिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन रिजल्ट क्या आया? कुल विद्युत उत्पादन का 3% है, 8 गीगावाट। खोदा पहाड़, इतने बरस तक और निकली चूया। अब वो चूया नहीं, अब हमको बहुत बड़ा काम करना, 100 गीगावाट निकालनी है। इसलिए एफडीआई के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की छूट देना उसकी बात है। फिर वो करे कि साहब इससे सुरक्षा में क्या होगा, वो सारा क्या होगा। ये सारा बिल ऐसा है कि इस बिल ने सब चीजों के लिए खोला है। मैं बताना चाहूंगा यूरेनियम के आधार पर, अब थोरियम है घरेलू संसाधनों पर आधारित, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिएगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर हमको टेक्नोलॉजी मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है और हमारी शर्तों के आधार पर मिलता है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है? फिर इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की क्या जरूरत है? और 2025-26 में परमाणु को प्रोत्साहन करने के लिए निजी निवेश करना आवश्यक हो गया है। यह समय की आवश्यकता है और यह बिल समय को पूरा करता है। अब आप देखिए कि छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको लगाए जाएंगे। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने माई बजाज सागर पर राजस्थान में उसका किया, हमारे राजस्थान में रावत बाटा में भी इसका है। तो ये सारी बात, और इसके साथ साथ मैं कहना भी चाहूँगा कि ये सारा जो है परमाणु, ये केवल इसी काम के लिए नहीं है, ये मेडिसिन के लिए भी काम आता है, ये एग्रीकल्चर में भी काम, और इन सब सारे सेक्टर्स में आज समय की आवश्यकता हो गया है। और इसलिए इस प्रकार का बिल लाना, इस प्रकार का चिंतन करना और इस काम को बढ़ाकर आगे ले जाना, ये समय की पुकार की और समय पुकार में इन्होंने किया है। माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर फिर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। उनका कि नाम भिन्न प्रकार के रखते हैं। साहब, नाम में बहुत गुण है। नाम रखने से काम बहुत आसान होता है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे हमने नारी शक्ति का रखा, नारियों को समझ में आ गया, बिहार में उन्होंने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से जो जो नाम रखेंगे वो अपना काम पूरा कर देंगे। अब ये नाम से डरते हैं। अब इसका असर बताता हूं मैं। जयराम जी, आपने राम के नाम का विरोध किया, हमने राम राम रटा। अब जी राम बिल आ रहा, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हमने राम राम रटा तो चोर, हाँ यही बैठे, तो हमने राम राम रटा तो हम उधर से पार कर कर इधर आ गए, और आप राम राम नहीं रट रहे तो वहां के वहीं बैठे हो। इसलिए नाम की महिमा है। नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी बूढ़ काढ़े, जो सुमरे गिर मेरु सिलाकत होत अजाकुर भारती बाटे। इसलिए ये नाम है शांति, या जो भी नाम है वो सोच समझ कर रखे गए हैं, और आप सबको भी शांति मिले। इसलिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you, Kanchiyam Tyagi.
Now, Honorable Member Jose K. Mani. So I oppose this bill not because we are against nuclear energy, but because we are against the reckless privatization of this highly sensitive sector. So this bill opens the doors for private players to build, own, and operate nuclear plants. Now we have seen this movie over and over again by this government by privatizing the sensitive sectors and areas. Every sector the government touches for privatization, it says efficiency, ease of doing business, and private expertise. In reality, what happens? Same cost, same procedure, same producers, same beneficiaries. So today, if you switch on the TV and see privatization news, you don't need an Einstein's brain to guess the name of the private players. If you see the seaport, if you see the airport, and we see the private players are playing where and how and when and by whom. And also, I will not be surprised a day will come, even the army will also be privatized. The government says this bill will transform India. But sir, transformation should not mean transferring risk from big corporate companies to ordinary citizens. Sir, this bill removes a very crucial safeguard. Under the 2010 law, if a nuclear accident happens due to defective equipments or faulty material, the operator has the right of recourse against the supplier. Under this bill, the operator remains liable, fine, but the suppliers of nuclear equipments and the fuel are completely excluded from liability. So the operator pays, and when the operator limit is exhausted, the government pays. When the government pays, the taxpayer pays. So, sir, the profit are privatized, but the risk are nationalized. Is this make in India, or this take profit from India, leave a liability to India? If suppliers know they are protected from liability, where is the incentive to ensure the highest quality? Sir, the government argues that the global suppliers demand this change. Sir, since when does India law get written to please the foreign corporations? If global suppliers are afraid of accountability, shouldn't that worry us more, not less? Sir, the Civil Liability for Nuclear Damage Act was framed after global experience. Sir, like global, it was meant to ensure victim-centric justice, not investor comfort. I conclude, sir, we are not against the nuclear energy. We are not against the technology. We are against the blind faith in privatization and policy captured by the powerful lobbies. Hence, I request the government to send this bill to the select committee before consideration. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jose K. Mani. Now, Honorable Member Dr. Ajit Madhavrao Kopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। हिंदुस्तान की सुरक्षा बढ़ाने वाला यह विधेयक है और महासत्ता बनाने वाला भी यह विधेयक है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस सदन में दिन ब दिन देखिए ऐसा विरोध कर